Back. Good morning, all. Namaskar. Am I audible? मित्रों, let me check once. Am I audible? Hello. Hello. Yes, yes, yes. थोड़ा वॉइस और बढ़ सकता क्या? I think. Hello, hello. अभी ठीक है सर जी? Audible? चलिए, मुझे पता है सर, देर आर वेरी सिंसियर स्टूडेंट्स, उनके लिए कर रहे हैं हम. जी सर जी. मित्रों, डर लगता है मित्रों शब्द से. क्या हुआ? क्या हुआ? पता नहीं यार, ये क्या हो रहा है पूरा नमूना. So, have you gone through yesterday's class? दादा, बताइए. ठीक है. क्या हो रहा है, बच्चे क्यों नहीं आ रहा है? मतलब क्या कंटेंट अच्छा नहीं है या फिर मेरे में कोई कमियां है तो बता देना. बंद कर देंगे सर इसको. मैथ्स भी अभी स्टार्ट नहीं करेंगे बिकॉज इफ दिस इज द enthusiasm, I'll invest my time in practice course which I'm starting on plus. देखो, मैं एक बात बताता हूँ सर. मैं पूरा गेट के लिए कंप्लीट सब्जेक्ट्स का प्रैक्टिस कोर्स 20 नवंबर से प्लस पे स्टार्ट हो रहा है सर. सो आई हैव फ्रेम्ड वेरी न्यू गुड क्वेश्चंस जो इसरो में मैं फ्रेम किया था. अराउंड 12 क्वेश्चंस एज इट इज आए विथ प्रूफ आई विल शो यू. तो वैसे ही हैव फ्रेम्ड. तो आप इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे तो मैं बंद कर दूंगा सर. जो मैथ्स का कमिटमेंट था वो भी नहीं करेंगे बिकॉज यू पीपल आर नॉट शोइंग एनी इंटरेस्ट. ठीक है सर. when there is no interest there is no point in studying. करेक्ट है सर. मुझे तो मजा नहीं आ रहा सर, लेकिन आई डोंट नो वेदर यू पीपल आर एंजॉयिंग और नॉट, लेकिन देयर हैज टू बी सम एंथुसियाज्म फ्रॉम योर लेवल. करेक्ट. बोलो कितने अच्छे क्वेश्चंस लाया देखो आपके लिए. एक बार देखना डियर स्टूडेंट्स, देखो कितने टफ क्वेश्चंस लाया हूं. आई ब्रॉट सम वेरी गुड टफ क्वेश्चंस. देयर इज नो एंथुसियाज्म. क्या करे बोलो? बंद करे दुकान को? शैल आई स्टॉप? आप बताइए. द बॉल इज इन योर कोर्ट. ठीक है. सो नाउ विल गो फॉर enthalpy of moist air. पहले हम थ्योरी करेंगे सर, देन विल सी क्वेश्चंस. ठीक है. enthalpy of moist air. okay. we know my dear students, we have seen some extensive properties. थर्मो में पढ़े थे. what are extensive properties? for example, suppose यहां पे
ये total volume V है sir. Let this volume be V1, let this volume be V2. Volume is an extensive property. If you want the total extensive property, what will you do? If you want the total volume V, क्या करेंगे? It will be V1 plus V2. Whenever you want the total extensive property, it is always equal to sum of the individual extensive properties. Hope this is clear. Okay. Similarly, can you give examples of some extensive properties? मैं बताता हूँ sir. In thermo, we have studied volume is an extensive property, entropy is an extensive property, enthalpy is an extensive property. Enthalpy, yes. अब देखते हैं sir. Let us take some moist air. This is moist air. In the moist air, we have some like dry air and we have some water vapor. मेरे प्यारे दोस्तों, let HV be the enthalpy of vapor and let HA be the enthalpy of dry air. I repeat, sir, ये capital HA which is kilojoule, capital HV. This is the enthalpy of dry air. It is the enthalpy of water vapor. So if you want the enthalpy of this complete moist air, let H be the enthalpy of moist air. That is equal to, enthalpy is an extensive property. If you want the total extensive property, मैं तो टाइम को बहुत इज्जत देता हूं सर. आप देख रहे होंगे even on YouTube, मैं ऐसा casual नहीं आ रहा हूं. 10:30 means sharp 10:30 I am coming, sir. So देखो, because I believe in discipline, I believe in content, I believe in hard work, I believe in dedication, I believe in sincerity. If you have these qualities, attend my class. Otherwise, please don't come to my class. Okay, right. So total enthalpy is equal to enthalpy of dry air plus enthalpy of water vapor. Excellent, sir. This is the equation. Now, देखो, you also know that the specific enthalpy is given by total enthalpy per unit mass. The total enthalpy is expressed in kilojoules generally, and mass is expressed in kg. So specific enthalpy has an unit of kilojoule per kg. ठीक है सर. अब देखो, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं सर? Total enthalpy is equal to m into small h. So therefore, capital H. Can you tell me what is capital H? मित्रों, what is capital H, sir? It is the total enthalpy of moist air. ये moist air का total enthalpy है. That is equal to HA. What is HA? MA into small HA plus HV. What is HV, sir? MV into small HV. Absolutely fine. अब ये बताओ, this is the total. In air conditioning हम क्या करते हैं सर? Generally in air conditioning हम क्या करते हैं सर? We express everything with respect to fixed quantity. Which one is a fixed quantity? Dry air. So what I am doing is, please note down that this is the total enthalpy of moist air. This H is the total enthalpy of, it is the total enthalpy of moist air. Excellent, sir. Therefore, I'll divide both sides with dry air. So what is the unit of capital H? Capital H is expressed in kilojoule. So therefore, अब देखो sir, capital H is equal to MAHA plus MVHV. Absolutely fine. तो दोनों तरफ I'll divide with MA. Both sides I divide with MA. तो अब बताओ sir, what is the meaning of this? This is the total enthalpy of moist air per kg of dry air. तो I will designate it with small h. This इसको मैं small h लिखूंगा. क्या आप इसका यूनिट बता सकते हैं सर? अब मैं बताता हूं. Small h. Capital H is in kilojoule and mass of air, this is dry air, so kg of dry air. Please note down carefully, this small h is nothing but it is the total enthalpy of moist air, but it is expressed per kg of dry air. इसमें टोटल आ गया सर, लेकिन हम पर केजी ड्राई एयर से एक्सप्रेस कर रहे हैं सर. आई रिपीट माय डियर स्टूडेंट्स, कैपिटल एच इज द टोटल एंथैल्पी ऑफ मॉइस्चर एयर, टोटल एक्सप्रेस पर केजी ऑफ ड्राई एयर. ओके, दैट इज इक्वल टू, सेपरेट कर देना, एम ए गया तो एच ए आएगा. एब्सोल्युटली फाइन. mv by ma into hv. Excellent, sir. Now देखो sir, but already we have studied what is mv by ma. Mass of vapor to the mass of dry air, it is specific humidity. So the enthalpy of moist air h, but it is expressed per kg of dry air. The enthalpy of this h is nothing but capital H by ma. The enthalpy of moist air per kg dry air is ha plus omega. This mv by mv can be written as omega into hv. ये याद रख लेना सर. This is the enthalpy of moist air, but
इट इज एक्सप्रेस पर केजी ऑफ ड्राई एयर। क्या ये क्लियर है सर सभी को? दिस इज क्लियर, आई प्रोसीड सर। मैं पूरा थ्योरी दे दूंगा सर, अगर टाइम सफिशिएंट नहीं है आपके लिए एक स्पेशल क्लास लेके, मतलब ऑन यूट्यूब ओनली, पूरे साइक्रोमेट्री के अराउंड 20 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। लेकिन ये सब आपके सिंसियरिटी पे डिपेंड करता है सर। मेरे पास सोर्स तो बहुत है, मतलब पूरा रेडी करके रखा है सर, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू। ओके राइट, तो अब ये देखो, H इज इक्वल टू एच ए प्लस ओमेगा एच वी। देखो एक बार, this H can be written as total enthalpy of moist air, total enthalpy of moist air expressed per kg of dry air, and this is the enthalpy. This is the small h means specific, specific enthalpy of dry air, and HV is specific enthalpy of water vapor. Water vapor. Now, up to this is the equation clear, sir? यहां तक equation clear है, then I'll proceed. Up to this, if the equation is clear, then I'll proceed, sir. And in the examination, this equation may be asked, but please note down that this is the total enthalpy of moist air. Up to this, is it clear? Absolutely fine. Let us proceed, sir. Ab dekho. Now, whenever you are, suppose we have potential energy. So whenever you say potential energy, you measure with respect to some reference line. That reference line, you also call it as a datum line. तो वहां से अगर बॉडी ऊपर है तो पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी, वहां से अगर बॉडी नीचे है तो नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी। एंथैल्पी इज आल्सो अ पार्ट ऑफ एनर्जी। तो देयरफॉर व्हेन आई से एनर्जी, इट शुड बी एक्सप्रेस विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस लाइन। देखो यहां पे ड्राई एयर है, यहां पे वाटर वेपर है, यहां पे वाटर वेपर है। ध्यान से सुनो सर, तो आर्बिट देखो, रेफरेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता सर, यू कैन टेक एनी रेफरेंस, फ्रॉम दैट रेफरेंस विल टेक एनर्जी लेवल्स। मतलब रेफरेंस इज ओनली आर्बिट्ररी और रैंडम। दोबारा बता रहा हूं सर, मुझे बताओ, सपोज मैं यहां देखो एक बार, यहां रेफरेंस लेता हूं, there is point 1 and there is point 2. Let us say the point 1 is at a height of 10 and point 2 is at a height of 15. So if I take this as the reference, what is the difference between 1 and 2? It will be 15 minus 10 is 5. So with this as the अगर ये रेफरेंस ले रहे हैं, ये रेफरेंस ले रहे हैं, तो दोनों का डिफरेंस क्या है सर? 5। अगर मैं ये रेफरेंस लेता हूं तो, अगर मैं ये रेफरेंस लेता हूं तो ये 0 बन जाएगा और ये 5 बन जाएगा। देन ऑल्सो द डिफरेंस इज 5 ओनली। सो इसीलिए जब भी आप रेफरेंस लेते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एब्सोल्यूट वैल्यू में चेंज, बट द डिफरेंस विल नेवर चेंज। समझ में आ रहा है सर? तो आप बोलेंगे सर डिफरेंस क्यों ले रहे हैं? इन थर्मोडायनेमिक्स वी आर ऑलवेज इंटरेस्टेड इन प्रोसेस। whenever there is a process, there is a change of property. When there is a change of property, I'll be taking difference. तो difference कभी भी reference से matter नहीं करता है। क्या ये बात सबको समझ में आई सर? Hope you understood this clearly. So therefore, लेकिन एक standard reference होता है सर। Always remember, there is always a standard reference. For dry air, the standard reference is the enthalpy of dry air is arbitrarily taken as, देखो यहां मैं दोबारा बता रहा हूं, द रेफरेंस इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम एंथैल्पी ऑफ ड्राई एयर को 0 मानते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज वो रेफरेंस है। वेरी गुड। बट डू यू थिंक our actual temperature of air is 0? No, it is the dry bulb temperature. So let the dry bulb temperature be, let the dry bulb temperature be T डिग्री सेंटीग्रेड। T डिग्री सेंटीग्रेड। अब ध्यान से सुनो, मतलब यहां पे हमने क्या किया, ध्यान से सुनो। हियर आर्बिट्ररली मैं एंथैल्पी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 0 मान रहा हूं सर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 0 मान रहा हूं। ठीक है सर,
तो अगर मान लो मेरे एयर का टेम्परेचर टी डिग्री सेंटीग्रेड है, ड्राइबल टेम्परेचर, व्हाट विल बी इट्स एंथैल्पी? एंड ऑलरेडी यू नो एयर इज ट्रीटेड एज एन आइडियल गैस, तो आइडियल गैस के लिए एंथैल्पी क्या होता है? सीपीटी, 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 वी हैव स्टडीड इन थर्मोडायनामिक्स। सो देयरफॉर एंथैल्पी ऑफ ड्राई एयर इज इक्वल टू सीपी ऑफ ड्राई एयर इनटू टेम्परेचर। बहुत इंपॉर्टेंट सर, लेकिन यहां पे कहां से लेना है सर आपको? 0 डिग्री से। सो देयरफॉर माय टेम्परेचर विल बी, ध्यान से सुनो, इट विल बी T माइनस 0 सर, बिकॉज द रेफरेंस इज 0। 0 से कितना ज्यादा है वो लेते हैं सर। मेरे प्यारे दोस्तों इधर देखना, तो यू कैन ऑल्सो टेक दिस 0 डिग्री सेंटीग्रेड एज 273। इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूं सर, इधर देखो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ध्यान से सुनिएगा, कैन आई राइट दिस एज CpAT माइनस CpA इंटू 0? यस, बिकॉज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहां पे हम 0 मान के चलते हैं, 0 इंटू समथिंग, ये तो 0 है, तो ये होगा एंथैल्पी ऑफ ड्राई एयर। तो देखो एंथैल्पी ऑफ ड्राई एयर इज, यहां पे मिस्टेक स्टूडेंट्स कर सकते हैं। आई विल टेल यू क्या मिस्टेक कर सकते हैं, बताता हूं सर। इधर देखो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर ये डिग्री सेंटीग्रेड है, दिस शुड ऑल्सो बी इन डिग्री सेंटीग्रेड। सो अगर ये केल्विन में है तो ये भी केल्विन में चाहिए सर, लेकिन दिस इज द टेम्परेचर डिफरेंस, इसलिए इट डजंट मैटर वेदर यू कीप इट इन केल्विन और डिग्री सेल्सियस। सो देयरफॉर अब देखो अगर हम केल्विन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या होगा सर? CpA, व्हाट विल बी T डिग्री सेंटीग्रेड? T डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, ये केल्विन में होगा। व्हाट विल बी 0 डिग्री सेंटीग्रेड? 0 प्लस 273, तो व्हाट विल बी दिस? प्लस 273 माइनस 273 गया, और T माइनस 0 सेम आएगा। सो इसीलिए अब याद रखना सर, द ड्राई एयर एंथैल्पी इज गिवन बाय, मेरे प्यारे विद्यार्थी, द ड्राई एयर एंथैल्पी इज गिवन बाय, इधर देखो, enthalpy of dry air is given by CpA into T. Actually it is not T, it is T minus 0, because मेरा रेफरेंस 0 डिग्री है, तो इसीलिए अगर ये डिग्री सेंटीग्रेड में है तो ये भी डिग्री सेंटीग्रेड में ही होगा। सो देयरफॉर द ड्राई एयर एंथैल्पी इज गिवन बाय CpA into T, where T is the dry bulb temperature in डिग्री सेंटीग्रेड। सो एक्चुअली हम केल्विन में लेते हैं, लेकिन डिफरेंस होने के कारण वो ऑटोमेटिकली इसी में आता है। सो दिस इज द एंथैल्पी ऑफ ड्राई एयर। एंड यू नो द स्पेसिफिक हीट वैल्यू ऑफ एयर, एयर का स्पेसिफिक हीट होता है 1.005 किलो जूल पर केजी पर केल्विन। सो याद रखना सर, ड्राई एयर एंथैल्पी इज CpAT, वेयर T इज द ड्राई बल्ब टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर हुआ नहीं हुआ सर? सभी को क्लियर हुआ नहीं हुआ सर? This is clear. I will proceed, sir. Say something, sir. Now, इधर आइए सर, वाटर वेपर। मेरे प्यारे दोस्तों देखो, whenever I say water vapor, yes, I can draw this diagram. देखो, let us take this as 0 डिग्री सेंटीग्रेड. Okay, sir. This is taken as reference. लेकिन how is water vapor in air existing, sir? How is water vapor in air existing? Superheated state. Water vapor is somewhere here, sir. सुनो, मेरा water vapor जो है ना, it is somewhere here. Let the temperature be T degree centigrade. यहाँ का टेम्परेचर, यू नो, वेदर इट इज वाटर वेपर और एयर, दे आर एट द टेम्परेचर ऑफ ड्राई बल्ब टेम्परेचर। ऑलरेडी आई टोल्ड यू ना, अरे यार हाथ ऐसा मुंह करो, तो वेदर इट इज वाटर वेपर और ड्राई एयर, उसका तो एक ही टेम्परेचर होगा ना। सो वाटर वेपर इज एट ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड ड्राई एयर इज एट ड्राई बल्ब टेम्परेचर। सो गए, सो ये मेरा रेफरेंस है सर मित्रों, ये मेरा रेफरेंस है। तो यहां से इसका एनर्जी लिखो। एक्चुअली वाटर वेपर कहां पे है सर? वाटर वेपर यहां पे है, तो ये मेरा रेफरेंस है, यहां से इसका एनर्जी कैलकुलेट करना है। तो क्या करेंगे सर? देयर इज लेटेंट हीट एंड देयर इज सेंसिबल हीट। तो अब एनर्जी बताओ सर, वाटर वेपर का एनर्जी बताओ सर। देयर इज अरे यार, एक सेकंड प्लीज। अशोक, गुड मॉर्निंग अशोक। आई एम गुड। ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ओके, ओके, श्योर सर, नो प्रॉब्लम. నేను క్లాస్ లో ఉన్నాను, అశోక్ క్లాస్ లో మాట్లాడతాను. ఓకే.
right. I'm sorry. चलो, ओके, राइट। देखिए, नाउ व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ वेपर? ये हीट क्या होगा सर? दिस विल बी लेटेंट हीट। यहां से यहां लिक्विड टू वेपर लेटेंट हीट प्लस ये हीट होगा। ये क्या होगा सर? इट विल बी सेंसिबल हीट। सेंसिबल हीट क्या होगा? सीपी ऑफ वेपर, सीपी ऑफ वेपर इनटू टेम्परेचर डिफरेंस। ये टी है, ये जीरो है, तो इट विल बी टी माइनस जीरो। तो अगेन जीरो इज इन डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये भी डिग्री सेंटीग्रेड में होगा। सो ध्यान से सुनो। सो द एंथैल्पी ऑफ वेपर इज गिवन बाय लेटेंट हीट प्लस सीपी ऑफ वेपर। अगर एग्जाम में कुछ भी नहीं देता है, you should take this as 2500। एग्जाम में कुछ भी नहीं देता है, you should take this as 1.88। is it okay sir? is it okay my dear students? हाँ, तो ये होगा एंथैल्पी ऑफ मॉइस्चर। अब टोटल लिखेंगे सर, इधर देखो, दोबारा बता रहा हूं। द ड्राई एयर एंथैल्पी इज CPA into T, where T is dry bulb temperature in degree centigrade. So enthalpy of vapor is given by vapor का अभी तो बताया सर। What is the enthalpy of vapor? Latent heat plus CP of vapor into T, where T is dry bulb temperature in degree centigrade। यहां तक सबको समझ में आया सर? प्लीज बताइए। दिस इज द एंथैल्पी ऑफ वेपर, एंथैल्पी ऑफ वेपर। नाउ आई वांट the total enthalpy of moist air, that is given by HA plus omega HV. So therefore H will be equal to HA. What is HA sir? CPAT plus omega times HV. What is HV? Latent heat plus CP of vapor into T. And this is the final equation for the enthalpy of moist air. But what will be the unit of this H? Already I told you, so many kilojoule per kg of dry air। जो लोग ऑब्जेक्टिव के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इसी को याद रखना सर। व्हाट इज दैट? The enthalpy of dry air, enthalpy of moist air is given as enthalpy of dry air plus omega times. So if you want the enthalpy of moist air, it will be specific heat of air 1.005 into dry bulb temperature in degree centigrade, in degree centigrade। why in degree centigrade? because actually यहाँ पे T minus जीरो आता है, रेफरेंस इज जीरो, वो डिफरेंस है एक्चुअली। जीरो तो खा गया, इसीलिए कंफ्यूज मत होना सर। अगर इसको केल्विन में करना है, इट शुड बी T plus 273 minus 0 plus 273 करना, again it will be 7। so this T is dBT इन डिग्री सेंटीग्रेड। यहां पे स्टूडेंट्स मिस्टेक्स कर सकते सर। इज इट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? तो मुझे एंथैल्पी ऑफ मॉइस्चर का इक्वेशन आ चुका है सर। आई गॉट द इक्वेशन ऑफ, दोबारा लिख रहा हूं सर, कुछ नहीं है, सिर्फ ये याद रख लेना। एंथैल्पी ऑफ मॉइस्ट एयर, देखो एक बार, एंथैल्पी ऑफ मॉइस्ट एयर पर केजी ड्राई एयर is equal to CPAT plus omega times latent heat plus CPV into T, where T is dry bulb temperature in degree centigrade and CPA is 1.005 kilojoule per kg per Kelvin, and omega is specific humidity, and this is if not given, if LH and again T is dry bulb temperature in degree centigrade. If LH and CPV are not given, agar whatever value is given you take, if they are not given, then take LH as 2500 kilojoule per kg and CPV as 1.88 kilojoule per kg per Kelvin। अगर नहीं देता है, ये वैल्यूज लेना है सर। इफ द वैल्यूज आर गिवन यू टेक। होप यू अंडरस्टूड दिस। सभी को समझ में आया सर? सिंपली ये वाला नोट्स में लिख लेना, सिंपली ये वाला नोट्स में लिख लेना, खत्म है सर। सो शैल वी प्रोसीड?
If you permit, I'll proceed, sir. Understood? Clear? Understood? Yes. अब देखो, next is degree of saturation. Degree of saturation, and we express it with mu. It is defined as the actual specific humidity to the humidity under saturation condition. Let me define. It is the ratio of actual specific humidity to the specific humidity. Sometimes we also call it as percentage humidity. Some people also call it as percentage humidity. कोई बात नहीं. To the specific humidity under saturation conditions. Specific humidity under saturation conditions. ये होगा सर. Mu is omega by omega s. Absolutely fine. Already you know that omega is equal to 0.622 PV by P total minus. मैं पहले पूरा थ्योरी कंप्लीट करूंगा सर. आप न्यूमेरिकल्स के लिए निश्चिंत रहिए सर. आई विल बी टेकिंग सेपरेट क्लास एंड आई विल कवर स्पेशली ऑन साइक्रोमेट्री. फर्स्ट लेट अस कंप्लीट थ्योरी सर. स्ट्रांग से थ्योरी कंप्लीट करेंगे सर, because it is one such chapter where theory matters a lot. देखो, okay, omega is 0.62 PV by P total minus PV. Excellent sir. And what is omega s sir? ओमेगा एस क्या करेंगे? सेम होगा इन ओमेगा एस के लिए. सैचुरेशन मींस क्या होगा? पीवी के प्लेस में पीवीएस आएगा. दैट्स इट. तो ओमेगा इज एब्सोल्युटली द सेम. व्हाट विल बी ओमेगा एस? पीवी के प्लेस में पीवीएस आएगा. तो इट विल बी 0.622 पीवीएस बाय P total minus PVS. I repeat, sir, this is the equation of omega S. This is the equation of omega. But I want degree of saturation. What is degree of saturation? Mu will be equal to omega by omega S. So therefore, mu will be equal to omega is 0.622 PV by P total minus PV omega by omega S. What is omega S, sir? It is PVS by P total minus PVS. Absolutely fine. ये कट जाएगा. So this will be equal to PV by PVS. Fine. PV by PVS. और ये ऊपर जाएगा. This will be P total minus PVS by P total minus PV. And you know very well what is the value of PV by PVS. Already I have given. Anyone what is PV by PVS? Anyone? What will be omega s? PV के प्लेस में PVS आएगा. So it will be 0.622 PVS by total minus PVS. बोलो बोलो बोलो. क्यों स्टकअप हुआ क्या? पता नहीं है, स्टकअप हुआ. यहाँ पे तो सब सही है सर. Here everything is fine. Let me check. There is no problem from my end. ऑफलाइन पढ़ने जा नहीं सकता, ऑनलाइन में करना नहीं चाहता हूँ. 1 second please. Is everything fine? Yes, is everything fine sir? हाँ बिल्कुल. हेलो, क्या हो रहा है? Is everything fine? I think there is no problem with network. सब सही चल रहा है सर यहाँ पे. Is everything fine?
ऑडिबल? हाँ, देखो, दिस टर्म इज नथिंग बट relative humidity. This term is relative humidity. PT minus PVS by P total minus PV. ये हो गया हमारा डिग्री ऑफ सैचुरेशन. इज दिस क्लियर सर? इज द डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्लियर सर? मेरे प्यारे दोस्तों, अभी तक क्या क्या देखे एक बार. व्हाट आर द इक्वेशंस दैट वी हैव सीन, एक बार चेक करेंगे सर. ओके, देखो, ओमेगा इज इक्वल टू द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी. व्हाट इज ओमेगा? देखो, एक बार रिकलेक्ट करेंगे. लेट्स रिकलेक्ट. स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और ह्यूमिडिटी रेशियो is equal to 0.622 PV by P total minus PV. What is P total? It is the total atmospheric pressure. What is PV? Partial pressure of vapor. And generally, you express omega as what? Omega is mv by mv. So it is so many kg of vapor per kg dry air. This is the unit. Okay. Then the second term that we have seen is relative humidity, RH, and that is mv by mvs. That is also written as PV by PVS. Excellent, sir. Third, today we have seen enthalpy of moisture. It is CPAT plus omega times latent heat plus Cp of vapor into T. Excellent, sir. So what is the unit of this total quantity? A total quantity ka kilojoule per kg dry air, where T is dBT in degree centigrade. Excellent, sir. Then we have seen degree of saturation. It is 5 into P total minus PVS by P total minus PV. एक बार check कर लेना sir. PT minus PVS by PT minus PV. Yes. अभी तक कंसोलिडेट हो गया सर. डेफिनेटली. नो 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 नो, मैं शेयर वीर करने के लिए नहीं बोल रहा हूं सर. प्लीज, आई एम नॉट सेइंग. मेरा एक ही दुख होता है ना, इतना अच्छा कंटेंट दे रहा हूं तो आजकल यूट्यूब पे क्या हो रहा है ना, पूरा हवाबाजी ओ बोल के एक एक क्वेश्चन जो 5 मिनट में होता है वो 25 मिनट तक सॉल्व करके आपका टाइम बर्बाद जब करेंगे वो सब सही रहेगा. मैं इतना कंटेंट इतना छोटे समय में ज्यादा कंटेंट दे रहा हूं तो भी आप इसको वैल्यू नहीं कर रहे. मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं सर. देखो, यू मे बी थिंकिंग अगर बच्चे नहीं आएंगे तो इसका जॉब निकल जाएगा. वो छोड़ दो सर. वो आई हैव क्रॉस्ड ऑल दोस लिमिट्स. भगवान ने बहुत दे चुका है. ठीक है, चलो यहां तक हो गया सर. कुछ ब्यूटीफुल बातें करेंगे सर. आप रेडी है सर? रेडी है. नाउ ऑलरेडी वी हैव सीन, माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द साइक्रोमेट्रिक चार्ट. ये कौन कल देखे थे सर? yesterday we have seen this. हाँ, what is this curve sir? You know that this is the saturation curve. On this curve, what is the relative humidity sir? The relative humidity is 100%. Absolutely fine. तो इस एक्सिस पे either you take omega or PV. कल बताया था, और omega. On this axis we have dry bulb temperature. So this is omega. कल ये बताया था, किसी को याद है सर? Yesterday I taught this. रिकलेक्ट कर लेंगे आप? यस. अब देखो सर, नाउ लेट अस ड्रॉ. देखो माय डियर लविंग स्टूडेंट्स, एक बार देखना. दिस एक्सिस इट इज ड्राई बल्ब टेम्परेचर. देखो, लेट अस अज्यूम दैट the dry bulb temperature is 0 degree centigrade here, the dry bulb temperature is 5 degree centigrade, the dry bulb temperature is 10 degree centigrade, the dry bulb temperature is 15 degree centigrade, so on so forth. मुझे बताओ सर, if I want to draw constant dry bulb temperature lines, अगर मुझे constant dry bulb temperature lines draw करना है तो क्या होगा सर? देखो, on this axis we have dry bulb temperature. कुछ नहीं करने का. इधर देखो, everywhere the dry bulb temperature is 0, everywhere the dry bulb temperature is 5, everywhere the dry bulb temperature is 10, everywhere the dry bulb temperature is 15. So these are all constant dry bulb temperature lines. So constant dry bulb temperature lines are vertical on psychrometric chart. Is it clear sir? Clear sir? Say something sir. If this is clear, I'll proceed. Very good sir. Now एग्जाम्पल, यहाँ पे ओमेगा है सर और पीवी. लेट अस से ओमेगा इज यहाँ पे मित्रों, लेट अस से द वैल्यू ऑफ ओमेगा इज
0.001, 0.002, 0.003 लाइकवाइज है। तो अब बताओ सर, इफ आई ड्रॉ दिस लाइन, मेरे प्यारे बच्चों, इफ आई ड्रॉ दिस लाइन everywhere, what is the value of omega, sir? So everywhere it is 0.03 and everywhere it is 0.02, everywhere it is 0.001. So these are my constant omega lines. So how are constant omega lines? They are horizontal. Constant omega lines are horizontal. Constant drybulb temperature lines are vertical. Up to this, is it clear, sir? We have seen two lines. Now और एक बात है सर, I want to draw constant enthalpy lines. अब देखो, मैं आपको सुनिए सर, I will tell you as to how to draw constant enthalpy line. The same concept must be applied for other lines also. दोबारा बता रहा हूं सर, I am developing a psychrometric chart. मैं चार्ट डेवलप कर रहा हूं सर. So I want these two lines, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, ओमेगा तो है. फॉर एग्जाम्पल देखो एक बार, it is a PV diagram. Pressure volume. How to draw constant pressure lines? How to draw constant pressure lines? How to draw constant pressure line? Pressure constant है तो horizontal होगा. How to draw constant volume lines? Vertical. So whatever you are taking on this, drawing constant this line or constant this line, there is no problem at all, because omega यहाँ पे लिए, जब ओमेगा इस एक्सिस पे लिए तो कांस्टेंट ओमेगा तो हॉरिजॉन्टल होना ही है, बिकॉज वर्टिकल इट इज सेम. सिमिलरली यू हैव टेकन ड्राइबल टेम्परेचर हियर, सो कांस्टेंट ड्राइबल टेम्परेचर तो वर्टिकल होना ही है. तो ड्राइंग ड्राइबल कांस्टेंट ड्राइबल टेम्परेचर लाइंस, कांस्टेंट ओमेगा लाइंस इज नॉट एट ऑल प्रॉब्लम. अब मुझे बताइए सर, बताइए सर, हाउ टू ड्रॉ, मित्रों मित्रों एक सेकंड, हाउ टू ड्रॉ constant temperature lines on this. हाँ, तब प्रॉब्लम आएगा. Yes or no, sir? How to draw constant temperature lines? तब प्रॉब्लम आएगा. Similarly, how to draw constant enthalpy lines on this? तब प्रॉब्लम आएगा. मैं बताता हूं सर. अब देखो क्या करना है. I will give you technique. मैं आपको एक लाइन का टेक्निक बताऊंगा, कॉन्सेप्ट दूंगा, क्योंकि इंटरव्यूज में पूछ सकते हैं. सो फॉर अदर लाइंस फॉलो द सेम प्रोसीजर. Yes or no, sir? क्लियर. अब देखो सर, देखो सर, मैं सबके लिए चला सकता हूं सर. एक बार मेरा एक क्लास देख लेना, बॉयलर ड्रॉट बोल के यूट्यूब पे सर्च करना सर. उतना बेस्ट कंटेंट मैं बता रहा हूं ना, सिंपल वे में देना बहुत मुश्किल है सर. बॉयलर ड्रॉट बोल के एक बार देखो, कितना मेरे पास, लाइक बिकॉज एज आई क्लियर्ड आईईएस ट्वाइस, मैं बहुत मेहनत किया सर, स्पेशली थर्मल एरिया पे. लेकिन आप लोग इंटरेस्ट शो नहीं करते, इसलिए मैं नहीं लेता हूं सर. डोंट वरी. हाँ, अगर देखो लीव इट, वो सब बाद में बात करेंगे. व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एंथैल्पी सर? CPAT प्लस ओमेगा टाइम्स, चलो लेटेंट हीट को 2500 ले लेंगे, प्लस CPV को 1.88 ले लेंगे इनटू टी. ऑलरेडी आई हैव गिवन दिस इक्वेशन. यस और नो सर? ऑलरेडी आई गिव यू दिस इक्वेशन. अरे ये तो लेटेंट हीट है. इफ नथिंग इज गिवन आई विल टेक 2500 and CPV if nothing is given I take 1.88. अब देखो, I want to draw constant enthalpy line. कुछ नहीं करने का सर, मैं आपको टेक्निक बताता हूं. देखो मित्रों, इधर देखो. लेट अस assume that मुझे ना, आई एम सेलेक्टिंग वन एंथैल्पी 50 किलो जूल पर केजी ऑफ ड्राई एयर. ये एंथैल्पी ड्रॉ करना है. आप बोलेंगे सर 50 ही क्यों सर? अरे यार आप 60 लीजिए, अरे यार आप 70. मतलब मेरा कहने का ये है, व्हाट आई मीन इज, आई वांट टू ड्रॉ अ लाइन where on every point the enthalpy is 50. You may be drawing 60 enthalpy also 70. I have given just an example of 50. तो आप हर एक लाइन पे, मतलब व्हेन यू आर ड्राइंग एवरीवेयर इट शुड बी 50. चलो देखो एक बार, 50 CPA 1.005 T प्लस ओमेगा 2500 प्लस 1.88 T. ध्यान से सुनिएगा सर. अब आपको क्या करना है पता है सर? रैंडमली एक टेम्परेचर ले लेना, रैंडमली एक टेम्परेचर ले लेना. लेट अस टेक द टेम्परेचर एज 5 डिग्री सेंटीग्रेड. तो क्या होगा सर? Put T as 5, put T as 5. So if everything is known, can I find out omega? Yes. इस particular enthalpy पे, by assuming the temperature, you can calculate omega. मिल जाएगा omega. Yes or no, sir? Omega मिल जाएगा सर. I repeat, I repeat, I repeat. आप ना क्या करो, एक 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 काम करते हैं सर. तो you take enthalpy 50,
टेम्परेचर को 5 डिग्री ले लेंगे, लेट्स टेक द टेम्परेचर एज 5 डिग्री, ठीक है सर। जब टेम्परेचर 5 डिग्री लिए तो टी को 5 पुट करो, टी को 5 पुट करो, एवरीथिंग इज नोन एक्सेप्ट ओमेगा, ओमेगा कैलकुलेट करो। बहुत बढ़िया सर। एक देखो, एक वैल्यू 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक ओमेगा का वैल्यू आ चुका है सर, ओमेगा का वैल्यू, ठीक है। सिमिलरली आपको क्या करना है सर, यू हैव टू ड्रॉ कांस्टेंट एंथैल्पी लें, तो एंथैल्पी को चेंज मत करो, अब क्या करो, नया वैल्यू ले लो, 50 इज इक्वल टू 1.005, इंस्टेड ऑफ 5 डिग्री नाउ यू टेक 10, अब 10 ले लेना प्लस ओमेगा इंटू, अब यहां पे 10 ले लेना, अगर 10 ले लेंगे एक नया ओमेगा आएगा, एक नया ओमेगा। So for the same enthalpy of 50, so if you take 10 डिग्री सेंटीग्रेड you get new omega, मतलब एक एक टेम्परेचर के लिए एक एक ओमेगा आएगा। देखो, एक एक टेम्परेचर के लिए एक एक ओमेगा आएगा और पूरा प्लॉट कर देना, आपको कांस्टेंट एंथैल्पी लेना आएगा। आज समझ में आया सर हाउ वी आर ड्राइंग? सर ये सब आपके टेक्स्ट बुक्स में नहीं मिलेंगे सर, यू डोंट फाइंड दिस इन योर टेक्स्ट बुक, हैव यू अंडरस्टूड सर? मैं बोल रहा हूं सर, आप एंथैल्पी को फिक्स करके change the value of temperature, calculate corresponding omega, तो T omega आएगा। Similarly, change the value of temperature, you get naya T omega, but everywhere this is 50 enthalpy constant. Please tell me, is this clear? तो अगर मैं प्लॉट करता हूं तो कुछ ऐसा आता है सर, देखो, one particular say 5 डिग्री सेंटीग्रेड, let us say this is omega, मान लो 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये ओमेगा आ गया। सिमिलरली 10 डिग्रीज, मान लो 10 डिग्रीज पे कुछ एक नया ओमेगा आया सर, नया ओमेगा, तो और 15 डिग्री ले लो, 15 डिग्री ले लो, कुछ नया ओमेगा आएगा सर। So now you join all this, and this is everywhere enthalpy is 50, enthalpy is 50, enthalpy is 50. Everywhere the enthalpy is, यहाँ पे everywhere the enthalpy is 50. It is a constant enthalpy length. 50, 60, 70, 80, 90, 100, 50, 40, 30, 20. These are all constant enthalpy lines on psychrometric chart. हमको ताली समझ में आए तो अरे संजीव, मैं अभी तो ड्रॉ करके बता रहा, हॉरिजॉन्टल होगा वर्टिकल हो रहा बोल रहा, तू क्या रे, थोड़ा पेशेंस रख, तेरा पेशेंस बहुत कम हो रहा है सर, आपका पेशेंस बहुत कम हो रहा है सर, मुश्किल है संजू, समझ में आया सर? आया? एंड सेम कॉन्सेप्ट आई ड्रॉ अदर लाइंस, सेम कॉन्सेप्ट आई ड्रॉ अदर लाइंस। देखो, देखिए सर जी, मित्रों मित्रों, नाउ देर आर अदर लाइंस नोन एज स्पेसिफिक वॉल्यूम लेंस, स्पेसिफिक वॉल्यूम लेंस, देखो एक बार, स्पेसिफिक, सुनो, ये कांस्टेंट एंथैल्पी लेंस है, दीज आर ऑल कांस्टेंट एंथैल्पी, ये कांस्टेंट स्पेसिफिक वॉल्यूम लेंस है, कांस्टेंट स्पेसिफिक वॉल्यूम लेंस है, एक्सीलेंट। और देखो, और क्या है, कांस्टेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी लेंस, इधर देखो सर, इधर देखो, व्हाट इज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑन दिस कर्व, व्हाट इज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑन दिस कर्व, एनीवन, व्हाट इज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑन दिस कर्व? नो वन इज गिविंग आंसर। ऑलरेडी मैं ड्रॉ किया और पूछ रहा हूं आपसे, मैं, मेरे से पागल इस दुनिया में कोई है ही नहीं है, 100%। तो ये सुपर हीटेड रीजन है, कल बताया था, सुपर हीटेड रीजन में व्हाट विल बी द रिलेटिव ह्यूमिडिटी, लेस देन 100, देखो 90, देखो 100, 90%, ये 90 है, 80, 70%, these are everywhere the relative humidity is 70, everywhere it is 80, everywhere it is 90, everywhere it is 100. So these are constant relative humidity lines. Are we clear, my dear students? मित्रों, कितने लाइंस देखे सर? कांस्टेंट ड्राइबल टेम्परेचर वर्टिकल, कांस्टेंट ओमेगा लाइंस हॉरिजॉन्टल, कांस्टेंट एंथैल्पी लाइंस इंक्लाइंड, कांस्टेंट स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइंस थोड़ा इंक्लिनेशन ज्यादा है, देन दीज आर रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइंस, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब देखो, we will try to draw constant dew point temperature lines,
मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा सर, कांस्टेंट ड्यू पॉइंट टेम्परेचर लाइंस कैसे ड्रॉ करते हैं? इधर देखो सर, बहुत बढ़िया सा कॉन्सेप्ट दूंगा। डू नॉट वरी मेरे प्यारे दोस्तों, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। आपको टेंशन लेने का ही नहीं सर, टेंशन लेने का ही नहीं। अब देखो समझ में आ रहा है सर सभी को? मेरे प्यारे दोस्तों सबको समझ में? अब देखो, दिस इज पीवी एंड दिस इज माई, कल देखे थे, ड्राई बल्ब टेम्परेचर। वेरी गुड सर। मेरे प्यारे बच्चों, सब लोग जिंदा है रे? क्या सब लोग जिंदा है रे? हे भगवान, सब लोग बोलो ओके सर बोलो एक बार। आई एम नॉट हैप्पी, एक बार ओके सर बोलो। सब लोग ओके सर बोलो। हाँ ओके दादा। चलिए, चलो कोई बात नहीं सर। लीव इट, आप लोगों को ना इंटरेस्ट नहीं है, मैं जा रहा हूं सर। आई एम लिविंग। ठीक है, बाय बाय बाय। चलो देखते हैं सर नाउ। दिस इज द ड्राइबल टेम्परेचर। मुझे बताओ, आई एम कूलिंग 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 कूलिंग, कंडेंसेशन इज स्टार्टिंग हियर। What is this temperature, sir? ये टेम्परेचर क्या है सर? आई नो दैट इट इज ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। कांस्टेंट ड्यू पॉइंट टेम्परेचर रीच होने के लिए इट शुड बी कूल्ड एट ए कांस्टेंट प्रेशर। टू रीच ड्यू पॉइंट टेम्परेचर it will be it should be cooled at a constant temperature. Is it okay sir? Yes. So this is dew point temperature. अब देखिए सर, मुझे बताओ ड्यू पॉइंट टेम्परेचर किस पे डिपेंड हो रहा है? एक बार सोच के बताना, ध्यान से सुनो सर, कुछ ब्यूटी आ रहा है अब। Let us say this is PV1. Let us say this is PV2. Let us assume that this is PV3. देखो एक बार मित्रों, इधर देखना। देखो मित्रों, आर यू रेडी? देखो, कांस्टेंट प्रेशर, कूल 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 कूल, इस प्रेशर पे दिस इज द सैचुरेशन। सो कैन आई कॉल इस पर्टिकुलर पीवी पे ये है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। इस पर्टिकुलर प्रेशर पे दिस इज द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, दिस इज द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। यस सर। सिमिलरली देखो देखो, कूल 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 कूल, इस पर्टिकुलर प्रेशर पे, इस पे यहां पे कंडेंस हो रहा है सर। तो इस प्रेशर के लिए दिस इज द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। सो इफ यू आर कूलिंग हियर, इस प्रेशर पे कूल 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 कूल, यहां पे कंडेंसेशन शुरू हो रहा है, दिस इज द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। तो आई हैव ए क्वेश्चन टू यू, मैं कुछ सवाल पूछूंगा सर। तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इज डिपेंडिंग ऑन व्हाट? This dew point temperature is depending on what? Yes, it depends only on PV, PV, PV. सिर्फ PV, PV, PV पे डिपेंड कर रहा है। जब तक PV कांस्टेंट है, देखो मेरे प्यारे दोस्तों, इफ दिस इज द स्टेट ऑफ एयर, अगर ये ड्राइबल टेम्परेचर है, तो अगर हम कूल कर रहे हैं तो ये ड्यू पॉइंट होगा। अगर ये ड्राइबल टेम्परेचर है, कूल कर रहे हैं तो यही होगा। जब तक पीवी कांस्टेंट है, मेरा ड्यू पॉइंट टेम्परेचर फिक्स होगा। when the value of PV is changing, the dew point is also changing. जब PV बढ़ रहा है, dew point is also increasing. जब PV increase हो रहा है, dew point is changing. So ध्यान से सुनिएगा सर। So dew point temperature depends only on PV. As long as PV is constant, the dew point temperature is constant. इधर देखो, मुझे बताइए, let this be state 1, let this be state 2. 1 के लिए ड्यू पॉइंट क्या है? कूल करना, ये ड्यू पॉइंट है। 2 के लिए ड्यू पॉइंट क्या है? कूल करना, ये है।
3 के लिए क्या है, कूल करना ये है। इसका मतलब एज लॉन्ग एज द प्रेशर 1 2 3 आर ऑन द सेम प्रेशर लाइन, सेम पीवी लाइन, जब तक पीवी सेम है ड्यू पॉइंट सेम होगा। जब पीवी चेंज होगा तो ड्यू पॉइंट भी चेंज होगा। क्या ये बात सभी को समझ में आई सर? This is the golden point, sir. Constant dew point temperature lines follow constant PV lines. Whenever PV is constant, the dew point is constant. So now I'll write a golden sentence. Dew point temperature depends on partial pressure of vapor. That is, as long, देखो मैं लिखना भी फास्ट क्यों लिख रहा हूं पता है सर? आपका टाइम वेस्ट ना होने के लिए। सो लिखना भी मैं फास्ट लिख रहा हूं। एवरीथिंग आई टेक केयर ऑफ यू, बट अनफॉर्चुनेटली आप लोग खुद का केयर नहीं लेते। dew point temperature depends on partial pressure of vapor. As long as PV, partial pressure of vapor को PV लिखेंगे, as long as PV is constant, dpt is also constant. Therefore, constant dpt lines follow constant PV lines. जब तक PV कांस्टेंट है, मैं ड्यू पॉइंट इज कांस्टेंट। तो ऑन साइक्रोमेट्रिक चार्ट हाउ डू आई शो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर लाइन? सर मित्रों, हाउ डू आई शो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर लाइन? वेरी सिंपल सर। देखो एक बार, ऑलरेडी यू नो, यहाँ पे आइदर यू टेक पीवी और ओमेगा। तो पीवी कांस्टेंट का मतलब क्या है? हॉरिजॉन्टल। सो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर लाइंस आर हॉरिजॉन्टल बिकॉज पीवी कांस्टेंट का मतलब डीपीटी कांस्टेंट। लेकिन व्हाट इज द, देखो मैं आपको एक ब्यूटीफुल पॉइंट बताऊंगा सर। सो आई टेल यू वन गोल्डन पॉइंट। देखो और एक बात है, तो वी कैन प्रूव दैट, अभी वो डेरिवेशन जरूर नहीं, वी कैन प्रूव दैट कांस्टेंट एंथैल्पी लाइंस and constant wet bulb temperature lines, they follow same trend. matlab along the constant enthalpy line, the wet bulb temperature is also constant. We can prove that sir by using Abjon formula, Ferrell's equation, carrier equations. एक empirical relation आता है सर, वहां से we can prove, but आपको जरूरी नहीं है। लेकिन क्या जरूरी है? constant wet bulb temperature lines are same as constant enthalpy lines. Let me repeat sir, let me repeat। यहाँ पे और एक बात बताता हूँ। constant wet bulb temperature lines are also constant enthalpy lines, are also constant enthalpy lines. ये है important. We can derive that. There is no problem at all. Is it okay? अब देखो कितने लाइंस देखे सर, भर भर पूरा स्केलेटन, मतलब हड्डियों पे, बोन्स पे विल फील फ्लेश नाउ। सो दिस वाज द स्केलेटन साइक्रोमेट्रिक चार्ट। मित्रों मित्रों देखो, अरे right, on this axis I have taken dry bulb temperature. On this axis either you take omega or PV. Absolutely fine, absolutely fine. मुझे बताइए सर, ये कौन सा कर्व है सर? एनीवन, व्हाट इज दिस कर्व सर? इट इज अ सैचुरेशन कर्व, इट इज अ सैचुरेशन कर्व सर। इस कर्व पे क्लियर क्लियर क्लियर, यस। अब देखो, नाउ लेट अस ड्रॉ कांस्टेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइंस। देखो एक बार, स्पेसिंग इज नॉट इक्वल, इधर से इधर जा रहा है तो डाइवर्ज होगा। तो यहां पे द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज 100%, RH लिखेंगे। हियर द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मे बी 80%, मतलब बीच में और है, देखो बीच में और है, 80 100 के बीच में 90 ऐसा। सो लेट अस टेक द रिलेटिव ह्यूमिडिटी एज 60%, let us take the relative humidity as some 30%, something like this. So everywhere the relative humidity is everywhere, these are, everywhere it is 60, everywhere it is 80. Are the constant relative humidity lines clear sir? Yes. Now मित्रों
अब मैं कुछ लाइन ड्रॉ करूंगा, आप बताइए। नाउ आई ड्रॉ वन लाइन, यू हैव टू टेल व्हाट आर दोज लाइंस। इधर देखो, ये कौन से लाइंस है सर? एनीवन इन द क्लास, व्हाट आर दीज लाइंस? ग्रीन वर्टिकल लाइंस। एनीवन? What are these green vertical? Very good, sir. Constant dry bulb temperature lines. Excellent students of India. अब देखो, ये वाले लाइन सर। Anyone? What are these purple lines? I'll give you chocolate. Excellent. Constant omega or constant PV lines or constant DPT lines also, because DPT line is also horizontal. भूल गए सर, भूल गए सर। कांस्टेंट ओमेगा, कांस्टेंट पीवी और कांस्टेंट डीपीटी लाइंस। ठीक है सर, एक्सेलेंट। नाउ कलर कौन सा ले लेंगे सर? ये वाला ले लेंगे। एनीवन? अब मैं ड्रॉ कर रहा हूं ऑरेंज वाले। व्हाट आर दीज लाइंस? व्हाट आर दीज लाइंस? अभी जो ड्रॉ किया, व्हाट आर दोज लाइंस? इंक्लाइंड। आई वांट कंप्लीट आंसर, आई वांट कंप्लीट आंसर। Excellent, sir. Constant enthalpy lines or constant wet bulb temperature lines. Constant enthalpy lines or constant wet bulb temperature lines. Excellent, sir. तो यहां पे एक्चुअली मित्रों, यहां पे एक स्केल होता है सर, ये एंथैल्पी का स्केल। इधर देखो, इधर देखो। क्या पता एग्जाम में कल यही देता है तो। इस बार मैं एक क्वेश्चन लीक किया सर, गेट 2026 में सीपीएम पार्ट में एक क्वेश्चन आने वाला है, क्रैशिंग ऑफ नेटवर्क। लिख के रख लेना, लिख के रख लेना, लिख के रख लेना। गेट 2026 क्रैशिंग ऑफ नेटवर्क, लिख के रख लेना, लिख के रख लेना। ये आ गया ऑलरेडी, आज मैं प्लस क्लास में डिस्कस किया सर। दीज आर ऑल कांस्टेंट एंथैल्पी। इधर देखना सर, मे बी यहां पे एंथैल्पी 10 है, यहां पे 20 है, तो यहां पे स्केल रहेगा सर। maybe 30, maybe 40, something like this, maybe 50। likewise यहाँ पे एंथैल्पी, अगर आपको कांस्टेंट 50 एंथैल्पी लाइन लिखना है तो यहां से ऐसा स्ट्रेट खींचो, ये कांस्टेंट एंथैल्पी लाइन होगा। सो दीज आर नॉट ओनली कांस्टेंट एंथैल्पी लाइंस बट आल्सो कांस्टेंट। समझ में आया सर सभी को मित्रों? these are not only constant enthalpy lines but also constant wet bulb temperature lines। leave it। अब आइए सर, अभी कुछ मिस हुआ सर, मैं बताएगा। कलर क्या ले लेंगे रे? ये नहीं दिखेगा। आई एम चेकिंग फॉर कलर सर। ये नहीं दिखेगा। रेड ले लेंगे, अब बचता क्या है? देखो देखो मित्रों, एनीवन? दीज आर कांस्टेंट स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइंस, उसका स्लोप एंथैल्पी से ज्यादा होता है सर। दीज आर कांस्टेंट स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइंस। होप यू अंडरस्टूड सर। खत्म सर। कितना प्यारा सा साइक्रोमेट्रिक चार्ट बन गया सर। आया ना में उत्तर चाहिए मुझे।
बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, एक्सेलेंट स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया, एक्सेलेंट स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, वी हैव ड्रॉन वेरियस लेंस। अब एक, हाउ इज वाटर वेपर इन एयर एग्जिस्टिंग, कल बताया था, yesterday I taught you very clearly, this is saturation, so this is the superheated region, for example, मान लो। और एक बात है सर, let us take moist air, there is some dry air, there is some water vapor, ठीक है सर। how many components are there, देखो इस moist air का फेज कितना है सर, हाउ मेनी फेजेस आर देयर, मेरे प्यारे दोस्तों इधर देखना, इफ यू सी द नंबर ऑफ फेजेस, water vapor is in gaseous state, dry air is in gaseous state, so totally it is in gaseous state, totally it is in gaseous state, so how many phases are there, only one। हाँ, ओमेगा इक्वल स्पेस होता है, ड्राइबल इक्वल स्पेस होता है, रिलेटिविटी नहीं होता है सर, एक ही फेज है सर, वो कौन सा फेज है सर, गैसियस फेज, सो नंबर ऑफ फेजेस आर वन। हाउ मेनी कंपोनेंट्स आर देयर, मैं बताता हूं सर, दो कंपोनेंट्स है, क्या आप बताएंगे क्या क्या कंपोनेंट्स है सर, कैन यू टेल मी व्हाट आर दोस कंपोनेंट्स, वन इज ड्राई एयर एक सिंगल कंपोनेंट, वन इज वाटर वेपर ए सेकंड कंपोनेंट, सो दो कंपोनेंट्स है, व्हाट आर द टू कंपोनेंट्स, एक ड्राई एयर एक वाटर वेपर, होप यू अंडरस्टूड। सो लेट अस अप्लाई गिब्स फेज रूल, गिब्स फेज रूल सेज P plus F is equal to C plus 2, चलो, do you know the meaning of F, do you know the meaning of F, the number of independent properties required to fix the state, number of independent intensive properties required to fix the state, मतलब how many independent variables are required, intensive variables are required to fix the state, वो degree of freedom show करता है। For example, if you get the degree of freedom as 2, उसका physical meaning क्या है, दो पैरामीटर्स चाहिए, दो इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टीज चाहिए, लाइक प्रेशर एंड टेम्परेचर टू फिक्स द स्टेट। सपोज द डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 3, इसका मतलब 3 चाहिए टू फिक्स द स्टेट। हैव यू अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ दिस, अब देखते हैं सर, नाउ लेट्स सी, इधर देखो, सो लेट अस अप्लाई दिस इक्वेशन फॉर मॉइस्ट एयर, एक फेज है प्लस एफ, सी 2 है प्लस 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ, एफ इज इक्वल टू 3, क्या मतलब है सर, द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मॉइस्ट एयर इज 3, कैन यू गिव द मीनिंग ऑफ दिस, कैन यू गिव द मीनिंग ऑफ दिस, इसका मीनिंग बताओ सर, इसका मतलब 3 parameters are required to fix the state, to what do you mean by fixing the state, एक बार state fix हो गया, you can easily find, you can give all parameters, देखो it is a moist state सर, इधर देखना सर, मान लो, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, let's say the dry bulb temperature is some 20 degree centigrade and the relative humidity is some 50%, how many parameters are given, both are independent, दो parameters दिए, सुनो carefully, but how many are required to fix the, to know the complete state of the system, 3 चाहिए sir, 3 चाहिए, okay, let us assume that this is some 10 degrees and this is some 20 degree, this is some 30 degree and so on and so forth, and these are the relative humidities, imagine यहाँ का relative humidity 50% है सर, क्योंकि यहाँ पे 100 है, अगर यहाँ पे 100 है तो ये 50 है, अब देखो 50, देखो ड्राई बल्ब टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड and relative humidity is so much, sir, relative humidity is 50%, everywhere it is 50%, the dry bulb temperature is 20, so this is the point, इस पॉइंट पे कांट आई फाइंड, एक बार पॉइंट लोकेट किए, कांट आई फाइंड ओमेगा, आराम से ओमेगा आएगा, कांट आई फाइंड द एंथैल्पी, आराम से फाइंड आउट करेंगे, मींस यहां पे तो 3 बोल रहा है लेकिन 2 से ही काम चल रहा है सर, सिर्फ विथ 2 पैरामीटर्स यू कैन इजीली लोकेट, विथ जस्ट 2 प्रॉपर्टीज यू हैव लोकेटेड, बट गिब्स फेज रूल बोल रहा है 3,
गिब्स फेज रूल सेज 3 आर रिक्वायर्ड, बट यहां पे तो 2 से ही काम चल रहा है, मतलब कुछ गड़बड़ है सर। एक्चुअली आई नीड 2 3, मुझे 3 चाहिए सर, मुझे 3 चाहिए, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 पैरामीटर्स दिए, कोई भी 2 पैरामीटर्स दिए। व्हेन 2 पैरामीटर्स आर गिवन आई कैन इजीली लोकेट एंड आई कैन इजीली फाइंड ओमेगा आ गया, एंथैल्पी आ गया। 2 पैरामीटर्स व्हेन 2 आर गिवन यू कैन फिक्स द पॉइंट, यू कैन फाइंड एवरीथिंग। टू नो द स्टेट एक्चुअली वी नीड 2, बट गिब्स फेज रूल सेज 3। कुछ तो गड़बड़ है सर। कोई गड़बड़ नहीं है सर, both are correct. The reason is actually it is 3 only. This chart is drawn for a fixed pressure. तो हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 बार या 1.01 बार पे ड्रॉ किया, मतलब एक थर्ड पैरामीटर जो प्रेशर था ना उसको ऑलरेडी फिक्स किए। तो ध्यान से सुनिएगा सर, आई नीड 3 प्रॉपर्टीज, but out of 3 one is already fixed. What is fixed? Pressure. क्योंकि whenever you are drawing psychrometric chart you always draw for a fixed pressure, एक particular pressure के लिए draw करते हैं, मतलब 3 में से एक already fix कर दिए। When already you have fixed I need 2 more. That's why on psychrometry ये सवाल पूछ सकता सर, ये सवाल पूछ सकता सर। For moist air the degree of freedom is 3, but on psychrometric chart only 2 parameters are required to fix the state. What is the reason for this? The reason is actually we need 3. Out of 3 this chart is drawn for a fixed atmospheric pressure, so out of 3 1 is already fixed. अरे यार मुझे 30 लाख रुपीस चाहिए बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करने के लिए, ऑलरेडी मेरे पास 10 लाख है, तो मुझे और कितने चाहिए? 20 चाहिए। I need 3 properties. Out of 3 1 is already fixed. When 1 is already fixed I need 2 more. अब अरे यार ये बच्चों को समझ में नहीं आया। No one is commenting. Have you understood मेरे परम पूजनीय विद्यार्थी? क्लियर? आया नहीं है सर? अगर क्लियर है तो मैं आगे बढ़ता हूं सर। ओके, राइट, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। गुड, होप यू अंडरस्टूड सर। If this is clear, I'll proceed, my dear loving students. Yes, yes, yes. Okay. Now, तो यहां पे एक सेंटेंस लिखता हूं सर। For moist air, for moist air, the degree of freedom is 3. But on psychrometric chart, on psychrometric chart, only 2 properties are enough to, अरे यार कौन है रे, enough to fix this state. This is because the chart is drawn for a fixed pressure. Okay, great. Now, basic psychrometric, कौन है रे ये? Basic psychrometric processes. Now,
अरे यार, मुझे ना इसको डिलीट करना पड़ता है सर, जस्ट 1 मिनट दीजिए मुझे। ओके, एक सेकेंड। जस्ट अ मिनट। चलो, ओके, राइट। మన హైదరాబాద్ వాళ్ళకి ఒథెంటిక్ గోదావరి స్వీట్స్ అండ్ పికిల్స్ దొరికి ఒక మంచి ప్లేస్ దొరికింది. మన టిఎఫ్ चलो, नाउ बेसिक साइक्रोमेट्रिक प्रोसेसेस। मेरे प्यारे दोस्तों, देर आर डिफरेंट प्रोसेस। फॉर एग्जांपल, कौन रे वो? फर्स्ट, सेंसिबल हीटिंग। एक एक देखते जाएंगे सर। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चल रहा है सर। फर्स्ट लेट मी कंप्लीट ऑल द थ्योरी। फर्स्ट, सेंसिबल हीटिंग। सुनो ध्यान से। लेट अस टेक coil. Imagine this to be a heating coil. A heating coil है सर, ठीक है सर, ये एक heating coil है। Now, air is entering. Whenever I say air, it is always moist air. मतलब air is always associated with moisture. Air आ रहा है। Let us assume that the temperature of air which is entering, let it be equal to some 20 degrees centigrade. Let the coil temperature be 40 degrees centigrade. And air, after absorbing heat, वो बाहर जा रहा है सर। Let the exit temperature of air be some 30 degrees centigrade, because when air is flowing, air picks up heat and thereby its temperature increases and it goes। ठीक है सर? Clear? Now, I have a question, sir. During this process, is there any change of moisture content in air? Air आ रहा है, heat ले रहा है और जा रहा है। Moisture content तभी change होगा when you add moisture or remove moisture. When you are removing moisture, first, how can I remove moisture from air, sir? You can remove moisture from air, पहले उसको cool करना, it should reach dew point temperature, then it should undergo condensation। देख समझ में आ रहा है? Sound not okay? क्या प्रॉब्लम है? Is there any problem with sound? अभी ठीक है? Sound not okay बोल रहा है कोई? अभी आ रहा है? No sound?
अभी आ रहा है? अभी क्लियर है ना? यस। बीच में डिस्टर्ब मत करना सर। अच्छा साउंड भी जाता है। देखो नाउ एयर इज एंटरिंग, मान लो एयर 20 डिग्री पे आ रहा है और हीट लेके जा रहा है। क्या कहीं पे एयर इस एयर, लेट अस अज्यूम दैट जो ड्राई एयर है लेट इट बी 1000 ग्राम, जो वाटर वेपर है लेट इट बी सम 20 ग्राम। ठीक है सर। तो व्हेन एयर इज फ्लोइंग दिस विल पिक अप हीट, हीट लेगा और जाएगा। तो यहां पे सिंपली कॉइल है सर, एयर इज टचिंग द कॉइल टेकिंग हीट एंड गोइंग। वहां पे कोई मॉइस्चर एडिशन या मॉइस्चर रिमूवल नहीं हो रहा है। सो जैसे एयर बाहर आएगा व्हाट विल बी द मास? ड्राई एयर कभी भी चेंज नहीं होता है सर। मास ऑफ ड्राई एयर विल नेवर चेंज, इट विल बी 1000। सो इन दिस केस is there any change of mass of vapor sir? Air has come, just picked up heat and it left. एयर आके हीट लेके गया सर। ड्राई एयर तो चेंज नहीं होगा, यहां पे वेपर भी चेंज नहीं होगा। तो क्या ना इससे ओमेगा इज नॉट चेंजिंग मित्रों। सो व्हाट इज ओरिजिनल ओमेगा? mv by ma, दिस इज 20 ग्राम बाय ma इज 1000 ग्राम। यहां पे ओमेगा क्या है सर एग्जिट पे, दिस इज इनलेट ओमेगा। mv इज 20, ma इज 1000। तो इज ओमेगा चेंजिंग सर? क्या ओमेगा चेंज हो रहा है सर? No. So such a process where there is only temperature change, no omega change, we call it as sensible. Means अगर heat हो रहा है, if my air absorbs heat, it is known as sensible heating. It is known as sensible heating. अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, I want to represent this process on psychrometric chart. देखिए इधर देखो, let the initial temperature of air be some 20 degrees centigrade. Now what is the final temperature sir? Maybe 30. Where will be the final point? देखो ओमेगा चेंज नहीं हो रहा है, मींस ओमेगा इज कांस्टेंट। व्हेन ओमेगा इज कांस्टेंट इट विल बी हॉरिजॉन्टल लाइन। जब ओमेगा कांस्टेंट है तो हॉरिजॉन्टल होगा, ये मेरा लाइन होगा सर। So it should move to the right. Why right? Because we are heating. Heating का मतलब क्या है सर मित्रों? Temperature is increasing from 20 to 30. This is my sensible heating. इसको बोलते हैं sensible heating, sensible heating, sensible heating. Hope you have understood. Are we clear, my dear students? This is clear. I'll proceed, sir. Clear? Now, similarly, फर्स्ट प्रोसेस समझ में आया, लेकिन वन स्टूडेंट आस्क्ड मी क्वेश्चन, देन हाउ टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ हीट ट्रांसफर, कितना हीट ट्रांसफर हुआ? देखो सर, एयर इज कमिंग एंड गोइंग। देखो इफ आई टेक दिस एज माय कंट्रोल वॉल्यूम, देखो एक बार मित्रों, अगर मैं इसको कंट्रोल वॉल्यूम लेता हूं तो क्या होगा सर? इट इज एन ओपन सिस्टम, air is entering, crossing the control volume and leaving. It is an open system and steadily it is flowing. Whenever it is steadily flowing, I have to apply steady flow energy equation. I have to apply, so steadily air is entering and leaving. Apply karo. I think in thermodynamics we have studied steady flow energy equation. What is that equation, sir? H1 plus C1 square by 2 plus Z1G plus Q is equal to H2 plus C2 square by 2 plus Z2G plus W. Very good, sirs. And kinetic energy changes, potential energy changes are negligible. So actually, what is happening from 1 to 2? Simply there is heat transfer. Simply my air is absorbing heat. कोई work नहीं हो रहा है sir. Always remember in air conditioning processes, whether it is a heating coil or cooling coil, there is only heat transfer, there is no work transfer. So therefore, now I write the work transfer is also zero. Simply coil है, air आ रहा है, heat लेके जा रहा है. Simply it is a heat exchange. So there is no work transfer. So ये भी कट कर दो. So generally kinetic potential energy changes बहुत small होते हैं, उसको neglect कर दिए. तो अब आइए,
तो H1 plus Q is equal to H2. So the heat transfer is given by H2 minus H1. Excellent students of India. कुछ नहीं करना है. What is the sensible heat? How much heat our air has absorbed? It is just difference of enthalpy. तो एक बार देखो सर, कुछ नहीं करने का. Initial point is known. देखो देखो मित्रों, initial point is known. So I know constant enthalpy lines are like this. I know constant enthalpy lines are this. So this is H1. Similarly, I know this enthalpy. This is H2. So मुझे H1 पता है, यहां से I'll read H2 पता है. The difference of this will give me amount of heat added. क्या ये बात सबको समझ में आई सर? Tell me something, my dear students. If you tell me, I'll clear. Clear? Okay. So therefore, this is the equation. Now मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा सर. My question is how to represent adiabatic process on psychrometric chart. यहां से बहुत conceptual questions आएंगे. So how to represent adiabatic process on psychrometric chart? Let me repeat. How to represent adiabatic process on psychrometric chart? You know that for adiabatic process, heat transfer is zero. जब heat transfer zero होता है, so therefore H2 is equal to H1, means enthalpy is constant. So याद रखना सर, on psychrometric chart, adiabatic process is represented by constant enthalpy lines. याद रखना, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है the process is adiabatic, इसका मतलब you follow constant enthalpy line on psychrometric chart. This is very 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 important. So यहाँ पे मैं golden sentence लिखता हूँ. For adiabatic process, the heat transfer is zero. When the heat transfer is zero, H2 minus H1 is zero. H2 is H1. Enthalpy is constant. So now I'm writing a golden sentence. Adiabatic process follows constant enthalpy lines on psychrometric chart. Excellent, sir. Have you understood this? मेरे प्यारे बच्चों, क्या आपको समझ में आया सर? चलो, if this is clear, let's proceed. I'll give you break after 5 minutes. एक 3-4 मिनट का ब्रेक ले लेंगे. Okay, sir? Very good, sir. Now, let's go to first process that we saw is sensible heating. So how do I represent sensible heating? Mitro, how do I show sensible heating? This is sensible heating, means horizontal, right? So what is sensible heating? It is the process of heating air at constant omega. It is the process, यहाँ पे लिखेंगे सर, ये भी सेंटेंस लिखेंगे. Sensible heating. Sensible it is the process of heating air at constant specific humidity. That is sensible heating. Hope you understood. Clear? Clear, sirs? Clear? Right. Now, let's go to the second process. Sensible cooling. Okay, we have a coil. Now it is not a heating coil, it is a cooling coil. Now, ध्यान से सुनो. What is पहले हम
सेंसिबल कूलिंग का डेफिनेशन लिखेंगे सर. फर्स्ट लेट्स राइट द डेफिनेशन ऑफ सेंसिबल कूलिंग. मित्रों, let me write the definition of sensible cooling. It is the process of cooling air at constant omega. ठीक है सर जी. No. I have a cooling coil. This is the cooling coil. Now, air is entering. This air is leaving. Exit is to entry is 1. ठीक है सर. No problem at all. हाँ जी. Let the temperature of air be T1. Let the temperature of air be T2. Let the coil temperature be Tc or T3. जो भी है. Very good, sir. Now I have some questions and you should answer. मेरे प्यारे दोस्तों, इधर देखो सर. प्लीज आंसर. कुछ सोच के आंसर देना. ऐसा नहीं कि आप लाइक आर्बिट्ररी दे रहे. सोच के आंसर देना. देखो. Let the dry bulb temperature be 30 degrees centigrade. Okay. This is the dew point temperature. Let it be some 20 degrees centigrade. ड्यू पॉइंट इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड. मान लो ये ड्यू पॉइंट इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड. ध्यान से सुनिएगा सर. ठीक है सर. आई डू नॉट. जब एयर आ रहा है, नाउ इट इज नॉट हीटेड, it is cooled. The coil temperature is low. When the air comes in contact with the colder surface, it loses heat. Then by the time it comes out from this coil, its temperature will be less. Now I do not want, लेकिन यहां पे एक threat है सर. The threat is, if you cool the air beyond some point, water vapor in air which is present may undergo condensation. मतलब अगर एयर को बहुत ही ज्यादा कूल कर रहे हैं, तो जो वाटर वेपर एयर में है, इट में reach dew point, it may undergo condensation. Moisture, जब condense होगा तो moisture जाएगा. When moisture is going, omega is changing. When omega is changing, it's not sensible cooling. So now I have a question. What should be the coil temperature for sensible cooling? For achieving sensible cooling, what should be this coil temperature? यहां पे मैं सारा दे चुका हूं. एयर जो आ रहा है उसका टेम्परेचर है मान लो 30 डिग्री सेंटीग्रेड. जो एयर आ रहा है उसका ड्राइबल टेम्परेचर, जो वॉट एवर द एयर इज कमिंग, इट्स टेम्परेचर इज 30. एंड द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर जो एयर आ रहा है उसका 20 है. व्हाट शुड बी द कॉइल टेम्परेचर? Someone said less than dew point. अगर less than dew point होता है, if the coil देखो, the dew point temperature of air is 20. Suppose the coil temperature is 10 degree centigrade. So air आके इतना ठंडा है ये, तो easily वो 20 तो रीच करेगा. कॉइल का टेम्परेचर तो 10 है, तो इट कैन इजीली रीच 20. व्हेन इट रीचेस 20, इट विल अंडरगो कंडेंसेशन. ड्रॉपलेट्स निकल जाएंगे, तो मॉइस्चर निकल जाएगा, तो यहां का ओमेगा सेम नहीं रहेगा. So what should be this temperature? It should not touch dew point temperature. If you do not want any condensation, it should not touch this temperature. So it should be above dew point temperature. So therefore, for sensible cooling, the coil temperature must be lower than dry bulb. जो एयर आ रहा है उस ड्राई बल्ब से कम होना चाहिए, सो दैट कूल होगा, लेकिन ड्यू पॉइंट से ज्यादा होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, द कॉइल टेम्परेचर, टी कॉइल शुड बी, इट शुड बी, it should be, देखो, greater than dew point temperature and it should be less than dry bulb temperature. अगर dry bulb temperature से कम है तो कूल हो जाएगा एयर. अगर ड्यू पॉइंट से ज्यादा है वो टच ही नहीं करेगा. देखो, suppose the coil temperature is, now the dew point is 20, let the coil temperature be 25. तो क्या होगा सर? अगर 25 है तो एयर आके 20 से कूल होके यहीं तक आ गया. स्टिल इट इज इन सुपरहीटेड स्टेट, सो नो वेपर इज रिमूव्ड, देयरफॉर इट इज. ये पूछ सकता सर क्वेश्चन. It should be, for achieving sensible cooling, the coil temperature must be greater than dew point and less than dry bulb.
आप सिंपली ग्रेटर देन ड्यू पॉइंट बोल के छोड़ देंगे, so they will laugh at you. So if the coil temperature is greater than dew point, I'll take 50 degrees centigrade. But air temperature is, देखो, dew point is 20, dew point is 20. So if the coil temperature is you said greater than dew point, तो इसको 50 ले लेंगे. Air temperature is 30, 30 से आ रहा है, but coil is 50. Will it be cooling? No. So it should be, this coil temperature should be, जो एयर आ रहा है उसके ड्राइबल से कम होना चाहिए, सो दैट कूल होगा, लेकिन ड्यू पॉइंट से ज्यादा होना चाहिए, सो दैट कंडेंस नहीं होगा. ओनली सेंसिबल कूलिंग विल टेक प्लेस. इज इट क्लियर सर? नहीं आया सर आपको? If you say yes, then I'll proceed, sir. So now I read, to achieve sensible cooling, to achieve sensible cooling, the coil temperature must be less than dry bulb temperature of incoming air and greater than, less than dry bulb temperature and greater than dew point temperature, greater than dew point temperature. Hope you understood, sir. Concept आ गया सर आपको? Excellent, sir. अगर ड्यू पॉइंट से कम होता है, it will touch dew point, it will undergo condensation, moisture is removed. When moisture is removed, omega is not constant. When omega is not constant, it is not sensible cooling. For sensible cooling, omega should be constant. So इसीलिए coil temperature should be above dew point and dry bulb से कम होना चाहिए. Hope you understood. So let me draw that. देखो. So air is initially at say T1. ओमेगा तो कांस्टेंट होना चाहिए सर, therefore horizontal. This is my point 2. So therefore, if you want how much heat is taken, simply it is H2 enthalpy 2 and simply it is H1. So difference of enthalpy will be the heat transfer. This is sensible cooling. Till now we have seen two processes. What are those? So what are those processes, sir? Sensible heating and sensible cooling. आप लोगों को समझ में आया सर? So we'll take a break of just 5 minutes. 5 मिनट का ब्रेक लेके हम शुरू करेंगे. So it is 12:04. I'll be coming at 12:09. Okay. So चलो ब्रेक लेते हैं सर. मित्रों, अभी हमारा ब्रेक टाइम शुरू हो रहा है रे बाबा.
हेलो हेलो, अभी आ रहा है? आई थिंक अभी आ हेलो या अभी लाउड एंड क्लियर ना? आ रहा है लेकिन आवाज फट रहा है। देखते हैं सर, अभी ठीक है? इज इट ओके? एक सेकंड, एक सेकंड मैं देखता हूँ। अब देखो, अब देखो, अभी ठीक है ना? हाँ, वॉल्यूम लो करके। अब देखो, नाउ इट्स गुड ना? अब ओके है ना? थैंक यू बेटा। मुझे कुछ नहीं आता इसका मैकेनिज्म, बट फिर भी कुछ भी ट्राई किया लेकिन वर्कआउट हुआ। ओके चलो, नाउ we have seen two things, that is a sensible heating and sensible cooling. ठीक है? Now third, pure humidification. Pure humidification. Third process. This is nothing but, this is point 1, this is point 2. This is omega 1 and this is omega 2. ठीक है sir? And when I say pure humidification, what is the temperature at 1 and 2? It is same. So pure humidification is nothing but it is the process of increasing. देखो एक सेकंड, ये किस पे लगा? माइक्रोफोन यूएसबी ऑडियो 1, माइक्रोफोन यूएसबी ऑडियो 1। ठीक है ना? इट इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग ओमेगा एट ए कांस्टेंट ड्राइबल टेम्परेचर। सो यहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट इंक्रीज कर रहे हैं। और एक बार, आई विल गो टू फोर्थ, प्योर डिह्यूमिडिफिकेशन। प्योर डिह्यूमिडिफिकेशन ये क्या है देखेंगे। देखो, इनिशियली इट इज 1, नाउ दिस इज पॉइंट 2, दिस इज ओमेगा 1, दिस इज ओमेगा 2, दिस इज T1 and this is T2. देखो, it is the process of decreasing omega at a constant ड्राइबल टेम्परेचर. It is known as pure dehumidification. लेकिन ये दो processes are practically very difficult to achieve. What is the reason for that? मैं बताता हूं सर। प्रैक्टिकली ये दो चीजें बहुत डिफिकल्ट टू अचीव। प्रैक्टिकली दीज टू आर डिफिकल्ट टू अचीव। द रीजन इज, अगर आपको एयर में से मॉइस्चर निकालना है तो क्या करेंगे सर? पहले मुझे बताइए सर, इफ यू वांट टू रिमूव वाटर वेपर फ्रॉम एयर, फर्स्ट इट शुड बी कूल्ड, it should touch dew point temperature. From dryball temperature it should be cooled, it should touch dew point temperature, so there is a temperature change, then it loses heat. तो इसका मतलब जब आपको वेपर निकालना है या ऐड करना है तो डेफिनेटली टेम्परेचर चेंजेस रहेंगे। सो ये दोनों प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, प्योर ह्यूमिडिफिकेशन, प्योर डिह्यूमिडिफिकेशन। द रीजन बीइंग, whenever you are removing moisture आपको तो कूल करना ही पड़ेगा। आप बताइए सर, कैन यू रिमूव द मॉइस्चर फ्रॉम एयर विदाउट कूलिंग? कैन यू रिमूव द मॉइस्चर विदाउट कूलिंग एयर? ये बताइए सर, आप बताइए, कैन यू रिमूव द मॉइस्चर विदाउट कूलिंग एयर? नहीं। मींस बिना टेम्परेचर चेंज के आप बोल रहे कांस्टेंट टेम्परेचर, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए ये दो हम डिस्कस नहीं करते, बिकॉज दे आर प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल टू अचीव, तो लीव इट। अब आएंगे मेरे प्यारे दोस्तों फिफ्थ प्रोसेस, heating and humidification. Heating and humidification. देखो सर, here we have temperature and here we have omega.
When I say heating, what is happening to the temperature? जब मैं heating बोलता हूं तो temperature क्या होगा? When I say heating, let us say the initial point is this. And this is my omega. Ah. When I say heating, temperature increases. Humidification. What does humidification mean? Omega बढ़ना. So temperature is increasing, heating. Omega is increasing due to humidification. So therefore, this is my final point. So this is our final temperature and this is our final omega, and this is nothing but heating and humidification. दिस इज हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन हीटिंग. तो आप बोलेंगे सर प्रैक्टिकली हाउ टू अचीव दिस, ये प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है अचीव करना? अब मैं बताता हूं सर, सुनो केयरफुली. तो ये प्रोसेस समझ में आया सर. हीटिंग मींस टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, इनिशियल से फाइनल टेम्परेचर बढ़ गया. ह्यूमिडिफिकेशन मींस ओमेगा बढ़ रहा है. But don't call this as sensible heating. This is not sensible heating, sir. In sensible heating, omega remains constant. Here, omega is increasing. So, it is not sensible heating. It is heating associated with increase of omega. So, heating and humidification. Practically, how to achieve? देखो एक बार. Now, मेरे प्यारे दोस्तों, here we have, this is steam. This is a steam spray. Now, सुनो carefully. एयर इज एंटरिंग, ध्यान से सुनिएगा. एयर इज एंटरिंग एट T1. अब वो स्टीम इज एट हाई टेम्परेचर, तो हीट ट्रांसफर होगा, इट्स टेम्परेचर विल इंक्रीज. एट द सेम टाइम स्टीम विल बी एडेड टू एयर, मतलब मॉइस्चर ऐड हो रहा है एयर को, तो ओमेगा बढ़ रहा है सर. लेट मी रिपीट. सो स्टीम विद द हेल्प ऑफ नोजल्स, एयर इज कमिंग, एयर इज कमिंग, steam is sprayed. As the steam temperature is high, the air temperature will increase heating. So at the same time, here steam को भी ले रहा है, so it is humidification. So therefore it is heating and humidification. The example is, by the time it comes out, यहां का टेम्परेचर ध्यान से सुनिए, by the time it comes out, नहीं आ रहा है सर आपको समझ में? क्या ये बात सबको समझ में आई सर? So एयर इज कमिंग, तो एयर जब आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा, जब एयर आ रहा है तो इट विल एब्सॉर्ब हीट बिकॉज टेम्परेचर इज मोर, तो हीट हो रहा है, टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग फ्रॉम T1 to T2. एट द सेम टाइम वो स्टीम को ले रहा है, तो जो ओमेगा है, ह्यूमिडिटी है, बढ़ के आ रहा है, तो यहां से ओमेगा बढ़ रहा है सर. सो देयरफॉर इट इज अ साइमल्टेनियस हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन. दिस प्रोसेस इज हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन. प्लीज बताइए. यस, ह्यूमिडिफिकेशन मींस वाटर वेपर को ऐड करना या ओमेगा बढ़ाना. ओमेगा इज mv by ma. ड्राई एयर इज नॉट चेंजिंग. वेपर जब बढ़ रहा है तो इसका मतलब यू आर एडिंग मॉइस्चर. इसका मतलब क्या है सर? ओमेगा इज इंक्रीजिंग. होप यू अंडरस्टूड मिस्टर संजीव. क्लैरिटी आ गया सर सबको? क्लियर? क्लियर? यस. अब देखिए, नाउ मैं एक सवाल पूछूंगा सर आपसे, अगर ये यूज करेंगे तो बता सकते. ये एक कॉइल है सर, इस कॉइल के अंदर से स्टीम फ्लो हो रहा है सर. इस कॉइल के अंदर से स्टीम फ्लो हो रहा है और इस कॉइल के ऊपर एयर जा रहा है सर. एयर इज फ्लोइंग ओवर द कॉइल. व्हाट इज द प्रोसेस? एयर इज फ्लोइंग ओवर द कॉइल. एक कॉइल है, कॉइल के ऊपर, कॉइल के अंदर स्टीम फ्लो हो रहा है. इन द कॉइल स्टीम इज फ्लोइंग, इन द कॉइल स्टीम इज फ्लोइंग, ओवर द कॉइल एयर इज फ्लोइंग. व्हाट इज द प्रोसेस? कन्वेक्शन बोलता है. ये कौन है रे? मैं बोला व्हाट इज द प्रोसेस बोला. यस, समवन सेड सेंसिबल हीटिंग. एब्सोल्युटली करेक्ट सर. क्योंकि वहां पे एयर सिर्फ हीट को ले रहा है,
अपना ओमेगा को चेंज नहीं कर रहा है सर, बिकॉज इन द कॉइल के अंदर से स्टीम फ्लो हो रहा है. There is no direct contact between air and steam which is flowing in the coil. So simply it is absorbing heat. मतलब no omega change. So it is a sensible heat. So steam flow in the coil. Steam flow in the coil is sensible heating. Steam spray in the air is heating and humidification. ये दोनों में फर्क है सर. Very very important sir. Steam flow in air. Steam flow steam flowing in a coil and air flowing steam flowing in a coil and air flowing over a coil is an example of sensible heating. Next, steam spray. There is a direct contact between steam and air. So moisture ले रहा है, humidity बढ़ रहा है, heat steam है तो temperature is increasing, so it is heating and humidification. Steam spray in air is an example of heating and hope you understood sir. Hope you understood sir. क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं सर विथ योर परमिशन? ठीक है. So we have seen 5 processes: sensible heating, sensible cooling, pure humidification, pure dehumidification, heating and humidification. Now we'll see the next one. What is this process, sir? Let this be 6th process. See, initially the air is at a temperature T1. The temperature is decreased from T1 to T2. T1 से T2 टेम्परेचर कम हुआ और ओमेगा, दिस इज ओमेगा 1, दिस इज ओमेगा 2. ओमेगा हैज इंक्रीज फ्रॉम 1 to 2, तो ह्यूमिडिफिकेशन, टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, कूलिंग. सो इट इज द केस ऑफ कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन. क्लियर? अब मैं बताता हूं प्रैक्टिकली हाउ टू अचीव दिस. दिस इज ओमेगा 1. क्लियर? Omega has increased from 1 to 2 to humidification. Correct? Clear? Yes. Practically, let's see how to achieve this. मित्रों, अब देखेंगे how is this possible practically. देखो, let us take यहां पे एक बड़ा शीट ऑफ वाटर है सर. It's all water and this is all insulated. Yes. देखो, now air is coming at state 1. इस air में water vapor भी है and this is state 2. मतलब it has not reached saturation. मतलब देखो, already whenever I show in this region my air is not saturated, unsaturated air. जब air यहां पे होता है तब वो saturated पे होता है. ये तो unsaturated air है, मतलब उसको और थोड़ा moisture चाहिए. It is in need of some moisture. When air comes, there is a long sheet of water. अब इस एयर में वाटर की थोड़ी कमी है, तो एयर क्या करेगा? अपने साइड से थोड़ा हीट देगा,
कल की तरह देखे थे हम वेट बल्ब टेम्परेचर कॉन्सेप्ट। तो थोड़ा हीट देके वेपर लेगा, थोड़ा हीट देगा, एयर विल गिव हीट, इट विल पिक अप मॉइस्चर। जब एयर हीट दे रहा है तो उसका टेम्परेचर घटेगा, जब मॉइस्चर ले रहा है तो ओमेगा बढ़ेगा। इट इज अ साइमल्टेनियस हीट ट्रांसफर मास ट्रांसफर। अपना हीट देते हुए मॉइस्चर को लेगा, हीट देते हुए मॉइस्चर को लेगा। व्हेन इट इज गिविंग हीट इट्स टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग, व्हेन इट इज गेनिंग मॉइस्चर ओमेगा इज इंक्रीजिंग। इज इट क्लियर? Okay. Now, मतलब if this sheet is very very long, एक situation ऐसा आ सकता है, if this is very very long, there can be a situation where it may reach saturation। देखो ये saturation की तरफ जा रहा है, saturation की तरफ जा रहा है, saturation की तरफ जा रहा है, saturation की तरफ जा रहा है। तो ऐसा हो सकता है if the sheet is very very long, अगर ये बहुत ही बड़ा है तो क्या होगा, तो at some point of time ये पॉइंट इधर आ सकता, saturation रीच हो सकता है। when it reaches this particular point, this is known as adiabatic saturation temperature or thermodynamic wet bulb temperature, because एडियाबैटिक लाइंस फॉलो को, एडियाबैटिक लाइन, ये तो एडियाबैटिक है सर, ये पूरा इंसुलेटेड है, कहां पे हीट ट्रांसफर हो रहा है, जो भी हो रहा है अंदर हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज एडियाबैटिक। Adiabatic. So this point we call it as adiabatic saturation temperature or thermodynamic wet bulb temperature. Why wet bulb temperature? Because adiabatic process follow constant wet bulb temperature lines. क्या ये बात समझ में आई सभी को? सर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है सर? इफ दिस इज क्लियर आई विल प्रोसीड। अरे यार, वाई द टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग? बिकॉज एयर इज गिविंग हीट। वाई इट इज गिविंग हीट? बिकॉज इट वॉन्ट्स मॉइस्चर, तो मॉइस्चर ले रहा है, तो ओमेगा इज इंक्रीजिंग, omega is increasing and it is losing it. So it is this process we call it as adiabatic saturation, because it follows on adiabatic means constant enthalpy or constant wet bulb. So इस point we call it as, अगर वो रीच हो रहा नहीं हो रहा, वो डिपेंड करता है इसका लेंथ। अगर ये लेंथ बहुत ही ज्यादा है तो एक ऐसा स्टेज आएगा कि वो पूरा मॉइस्चर लेके सैचुरेशन होगा। सो देयरफॉर अगर वो रीच नहीं होगा तो शायद वो यहां पे हो सकता है सर। देखो ओके, एंड दिस पॉइंट, दिस अगर एक्सटेंड करेंगे, दिस वी कॉल इट एज adiabatic. Why is saturation? Because it is saturation, because it is a saturation curve. Why adiabatic? Because constant enthalpy, because यहां पे कोई हीट ट्रांसफर बाहर से नहीं हो रहा है, जो भी हो रहा है अंदर, because heat transfer is a boundary phenomenon. This boundary is entirely insulated, so therefore it is adiabatic. Hope you understood मेरे प्यारे भाइयों बहनों। So therefore this is known as adiabatic सैचुरेशन टेम्परेचर बोलते हैं इसको, और सम पीपल कॉल इट एज थर्मोडाइनमिक वेट बल्ब टेम्परेचर और excellent sirs. So hope you understood this sixth process. Now let's go to the seventh process. आप बताइए सर, ये प्रोसेस क्या है सर? इनिशियली दिस इज द पॉइंट, बोलो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्रोसेस? Excellent sir. Cooling, temperature is decreasing from 1 to 2, temperature is decreasing. At the same time, it's not sensible cooling, omega is also decreasing 1 to 2. When omega is decreasing, we call it as dehumidification. Generally we follow this in summer air conditioning. Generally we follow this in summer air conditioning. ठीक है? The question is how to achieve this? अब सवाल यह है इसको कैसे अचीव किया जाए? Now this is the question. How to achieve this? My dear students, अब मैं बताता हूं, इधर देखो, इधर देखो।
whenever there is a removal of moisture, यहां पे का moisture is removed. Agreed, sir? 100% मॉइस्चर इज रिमूव. यहां पे तो मॉइस्चर निकाल ही गया सर, निकाल दिए सर, मॉइस्चर इज रिमूव. तो व्हेन इज इट पॉसिबल टू रिमूव मॉइस्चर? इसका मतलब जो कॉइल है, कॉइल टेम्परेचर शुड बी लोअर देन ड्यू पॉइंट. When the coil temperature is lower than dew point, my air will reach dew point, then it loses moisture, condensation होगा. इसलिए coil का temperature जब dew point से ज्यादा रखते हैं, there is no question of dehumidification. It will be sensible cooling. So to achieve cooling and dehumidification, whatever the coil you have, that coil temperature should be lower than dew point temperature. Agreed? अरे यार मुझे आपको बताता हूं, सुनो एक सेकेंड. This is the dry bulb temperature and this is the dew point temperature. Let us say the dew point is 18 degree centigrade, dry bulb is 28 degree centigrade. तो अगर आपको यहां से मॉइस्चर निकालना है, एक सेकंड. सो अगर आपको मॉइस्चर निकालना है, इफ यू वांट टू रिमूव मॉइस्चर, तो ये पॉइंट को टच करना ही है, तभी तो मॉइस्चर निकल जाएगा. इज इट ओके? सो देयरफॉर अगर कॉइल का टेम्परेचर 18 से कम होता है, इफ द कॉइल टेम्परेचर इज लेस देन 18, एयर विल कम, इट विल रीच 18, देन इट लूज मॉइस्चर, देन इट गोस आउट. देयरफॉर कूल भी हो रहा है, कंडेंस भी हो रहा है. सो कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन. टू अचीव कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन, द कॉइल टेम्परेचर मस्ट बी लोअर देन ड्यू पॉइंट टेम्परेचर. यहां पे लिख रहा हूं सर. ठीक है सर, इधर देखो. देयरफॉर हम यहां पे दिखाएंगे सर, हम less than dew point temperature. So air is coming at 1, air is leaving at 2. So once it touches this colder surfaces, it loses moisture. This is dehumidified quantity, dehumidified water vapor. तो यहां पे when air comes, its vapor will be less than this vapor because some vapor is removed. So this is cooling and dehumidification. Is it clear, my dear students? This is dehumidified quantity, dehumidified water vapor. Wonderful, sir. So to achieve cooling and dehumidification, यहां पे मैं एक सेंटेंस लिखूंगा सर. To achieve cooling and dehumidification, coil temperature must be lower than dew point temperature. Hope you understood. करेक्ट? राइट. लास्ट प्रोसेस देखेंगे, एक बचा है सर. हम आई नॉट राइट फर्स्ट, यू हैव टू आइडेंटिफाई. बताओ, व्हाट इज दिस प्रोसेस? बोलो. Temperature is increasing from T1 to T2, so definitely it is heating, but not sensibly heating because there is a change of omega, and omega is decreasing from omega 1 to omega 2. It is heating and dehumidification. Some people also call it as adiabatic chemical dehumidification. इस process को we all, some people call it as, I'll explain the reason with reason. Adiabatic chemical dehumidification. Adiabatic chemical dehumidification. Some people also call it as adiabatic chemical dehumidification. ऐसा क्यों, मैं बताता हूं. देखो, एक्चुअली क्या होता है ना, some chemicals like
सिलिका जेल एंड एक्टिवेटेड एल्यूमिना। पीएसयू के लिए इसको याद रख लेना सर, नॉट फॉर गेट। सर्टन केमिकल्स लाइक सिलिका जेल, हैव यू एवर सीन दैट टैबलेट्स जब होते हैं ना, उसमें एक सिलिका जेल का एक होता है सर, विच एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर। सिलिका जेल हैज ग्रेटर एफिनिटी फॉर वाटर, इट एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर। ठीक है सर। अब देखो होता क्या है मैं बताता हूं सर, देखो एक बार क्या होता है मैं बताता हूं सर। इसी पेज में कर लेंगे सर, कोई टेंशन नहीं, इसी पेज में। एक्चुअली देर इज अ सिलिका जेल, दिस इज सिलिका जेल मान लो। ओके, दिस इज सिलिका जेल। एयर आ रहा है सर, एयर। ठीक है। सो व्हेन एयर कम्स, इन एयर देर इज वाटर वेपर, अग्रीड। इन एयर देर इज वाटर वेपर, तो वाटर वेपर तो है ही है। तो ये ध्यान से सुनिएगा सर, बट दैट वाटर वेपर इज इन गैसियस स्टेट, वेपर स्टेट, बट should be removed from air, then only this can absorb. Now this silica gel has a greater affinity for water, मतलब सिलिका जेल का काम है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेना। लेकिन दिक्कत यह है कि मॉइस्चर इज नॉट इन लिक्विड स्टेट। अगर वो लिक्विड स्टेट में होता है तो ऑटोमेटिकली वो लेगा, लेकिन वो गैसियस स्टेट में है सर, दैट इज इन वेपर स्टेट। क्या करना चाहिए सर? फर्स्ट दैट वेपर शुड बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, देन ओनली इट विल बी सेपरेटेड। पहले तो वेपर लिक्विड में कन्वर्ट करना है सर। नहीं आ रहा है सर समझ में? नहीं आ रहा है तो होता क्या है ना, जब एयर आ रहा है तो सिलिका तो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो बाय द टाइम एयर कम्स आउट उसका ओमेगा तो कम होता है सर। बाय द टाइम द मॉइस्चर कम्स आउट उसका ओमेगा तो कम होता है सर। क्यों कम होता है? बिकॉज सिलिका जेल मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लिया, तो ओमेगा 1 से ओमेगा 2 ओमेगा ड्रॉप हुआ। नाउ माय क्वेश्चन इज, ओमेगा तो ड्रॉप हुआ बिकॉज सिलिका जेल हैज एब्जॉर्ब, सिलिका जेल तो एब्जॉर्ब किया, ओमेगा 1 से ओमेगा 2 ड्रॉप हो गया। लेकिन व्हाई द टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग? Now I have a question. Why the temperature is increasing? This is my question. So when देखो एयर में जो मॉइस्चर था थोड़ा बहुत ये सिलिका जेल लिया, सो बाय द टाइम एयर कम्स आउट उसका मॉइस्चर तो कम होगा क्योंकि सिलिका जेल हैज एब्सॉर्ब्ड। तो एयर में इनिशियली वॉट एवर द मॉइस्चर वॉज देयर, सम वाटर वेपर इज टेकन बाय द सिलिका जेल एंड देयर बाय व्हेन इट कम्स आउट द मॉइस्चर विल बी लेस, दैट्स व्हाई ओमेगा इज डिक्रीजिंग। व्हाई द टेम्परेचर ऑफ एयर इज इंक्रीजिंग फ्रॉम T1 टू T2? एयर का टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है सर? दैट इज माई क्वेश्चन। सोच के आंसर देना। Taken by this signal and then when it comes out the moisture will be less, that's why omega is decreasing. Why the temperature of air is increasing from T1 to T2? Temperature क्यों बढ़ रहा है सर? आंसर दो, सोच के आंसर दे। I am waiting for your answers. I am waiting for your answer. Come on. I am waiting for your answers. अरे यार, प्लीज वेटिंग फॉर योर आंसर। कुछ तो आंसर दो, से समथिंग। मैं सवाल पूछा सर बिकॉज आई एम इन्वॉल्विंग यू पीपल, इट्स नॉट वन वे। ड्यू टू मॉलिक्यूलर कोलिजन, रॉन्ग। कुछ भी मत बोलना सर, आई नीड आंसर। देखो सर, पहले वाटर किस स्टेट में था? व्हेन दैट वाटर वाज इन एयर इट वाज इन वेपर स्टेट। When vapor is converted into liquid, मतलब latent heat of condensation is released। समझ में आ रहा नहीं आ रहा सर? जब वेपर था, अब वेपर यहां पे लिक्विड में बन गया, सो वेपर लिक्विड में कैसे बनता है सर? लेटेंट हीट लूज कर रहा है,
जब वो लेटेंट हीट लूज कर रहा है, वो लेटेंट हीट मेरा एयर ले रहा है सर। देखो सर, ओरिजिनली द water vapor which was in air, that is in superheated state, gas state, once it touches silica gel, that water vapor is converted into liquid. When, how can water vapor be converted into liquid? By losing heat. Which heat? Latent heat. वो heat air ले रहा है. So when the temperature is increasing, the latent heat of condensation is added to air. वो heat लेते हुए moisture को खोते हुए जा रहा है सर। वो समझ में आया सर आपको? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सर। सो हाउ कैन वेपर बी देखो मुझे इधर इधर देखो सर, ये वेपर लिक्विड में कैसा कन्वर्ट होगा सर? व्हेन वेपर इज कन्वर्ट टू लिक्विड, लेटेंट हीट इज रिलीज, दैट हीट इज टेकन बाय एयर। सो जब हीट इज टेकन बाय एयर, लेटेंट हीट रिलीज होगा, तो वो क्या कर रहा है? हीट लेते हुए मॉइस्चर को छोड़ रहा है। क्योंकि सिलिका जेल का अट्रैक्शन ज्यादा है, सिलिका जेल मॉइस्चर को ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, इसलिए एयर इज लूजिंग। हैव यू अंडरस्टूड सर? व्हाई इज इट नोन एज एडियाबैटिक? बिकॉज जो भी हो रहा है सर, ये अंदर हो रहा है सर। वॉट एवर इज हैपनिंग, हीट रिलीज हीट टेकन, अंदर अंदर हो रहा है, बाहर नहीं हो रहा है। दैट्स व्हाई एडियाबैटिक। व्हाई इज इट नोन एज केमिकल? बिकॉज सर्टन केमिकल्स लाइक सिलिका जेल इज यूज्ड, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज केमिकल डिहुमिडिफिकेशन। इज इट क्लियर सर? Now we have seen all basic processes. Let us represent on a single diagram. What is this process? Anyone? What is this process? Come on, come on. Basic processes. Let us represent on a single diagram. Yes. It is a sensible heating. Absolutely fine. It is sensible heating. This is sensible cooling. Pure humidification, pure dehumidification, ये दो तो practically possible नहीं. Heating and humidification, cooling and humidification, cooling and dehumidification, heating and dehumidification. Yes. क्या ये बात सबको समझ में आई सर? क्लियर क्लियर। अब हम क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे सर। बहुत बहुत अच्छा पॉइंट, मिक्सिंग ऑफ एयर स्ट्रीम्स। Sometimes in examination, what he does is he'll mix two streams and he'll ask you the state of the resultant. देखो सर, एयर ऐसा आ रहा है सर, बहुत ध्यान से देखो। नहीं, इतना बड़ा तो मेरे पास स्पेस नहीं है, तो मैं यहां ले लूंगा सर। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। This is adiabatic mixer. देखो, let this be state 1, let this be state 2, let this be state 3. Air at a state 1 is entering, air at a state 2 is entering, दोनों मिक्स होकर रिजल्टेंट आ रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों इधर देखना, मतलब जब एयर आता है डेफिनेटली उसके पास कुछ ड्राई एयर भी होगा, उसके पास कुछ वेपर भी होगा। लेट MA1 बी द ड्राई एयर ऑफ दिस एयर, लेट MB1 बी द मास ऑफ वेपर एट दिस स्टेट, लेट T1 बी द टेम्परेचर ऑफ एयर विच इज कमिंग, ये तो ड्राइबल टेम्परेचर है। लेट Ω1 बी द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ऑफ दिस एयर, लेट H1 बी द एंथैल्पी ऑफ दिस मॉइस्ट एयर विच इज एंटरिंग। सिमिलरली, होप यू अंडरस्टूड सर। सिमिलरली जो एयर इधर आ रहा है, लेट MA2 बी द मास ऑफ ड्राई एयर विच इज एसोसिएटेड विद दिस एयर, लेट MB2 बी द मास ऑफ वेपर, let T2 be the temperature at which the air is coming,
Let omega 2 be the specific humidity of this air which is coming. Let H2 be the enthalpy of this complete moist air which is entering. यहाँ पे. Let Ma3 be the mass of dry air. Let Mv3 be the mass of vapor. Correct. Let omega 3 be the specific humidity here. And then उसके बाद क्या है? H3 be the enthalpy here. Let T3 be the temperature here. Now, ध्यान से सुनिएगा. So he has given this and he is asking this. तो आराम से यहाँ पे ओमेगा 1 तो कैलकुलेट कर सकते हैं. ओमेगा इज mv by ma. तो ये ओमेगा 1 विल बी mv1 by ma1. ओमेगा 2 कैसे कैलकुलेट करेंगे? mv2 by ma2. ओमेगा 3 कैसे कैलकुलेट करेंगे? mv3 by ma3. ठीक है सर. नाउ आई हैव अ क्वेश्चन सर. How can I find the resultant state? So 1, 2 are known to me. 1, 2 are known to me. I want 3. How can I find 3? Anyone? क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई करके करेंगे सर? Which concept do we apply? First, conservation of mass. अरे यार क्या हुआ? कंजर्वेशन ऑफ मास. लेकिन यहां पे दो मासेस को कंजर्व करेंगे. ड्राई एयर यहां का, ड्राई एयर यहां का, ड्राई एयर यहां का. वॉट एवर द ड्राई एयर इज एंटरिंग, वॉट एवर द ड्राई इज एंटरिंग, द सम ऑफ दीज टू ड्राई एयर्स विल बी दिस ड्राई एयर. करेक्ट. सेकंड इज whatever the water vapor is entering, whatever the water vapor is entering, that should be equal to this water vapor. So यहां पे conservation of mass dry air का, then यहां पे water vapor. देखो सर, what is dry air? Ma1 at point 1, Ma2 at point 2. This should be equal to the mass at 3. This is entering, this is entering. ये दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट आ जाएगा. यहां पे वाटर वेपर mv1 plus mv2 is mv3. Excellent sir. This is one. Hope you understood sir. Second, now we'll go for conservation of energy. And you know steadily ये flow हो रहा है. एक बार steady flow energy equation देखना. H1 plus C1 square by 2 plus Z1G plus Q is equal to H2. तो काइनेटिक पोटेंशियल तो हट गए. ये इंसुलेटेड है तो हीट ट्रांसफर नहीं है, तो सिर्फ एंथैल्पी बचेगा. एक बार स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन का देखो. H1 plus C1 square by 2 plus Z1G plus Q. इंसुलेटेड है तो हीट ट्रांसफर नहीं, काइनेटिक पोटेंशियल हट गए तो सिर्फ एंथैल्पी बचता है सर. सिर्फ एंथैल्पी बचता है. इसका मतलब वॉट एवर द एनर्जी इज एंटरिंग and whatever the energy is entering, that should be equal to this energy. अब ध्यान से सुनो सर. क्या ये बात समझ में आई सर सभी को? इसको ऐसे भी लिख सकते सर. ओमेगा इज इक्वल टू mv by ma. So I can write mv as ma omega. Correct or not sir? I can write mv as, देखो, what is mv1? What is mv1? ma1 omega 1. What is mv2? ma2 omega 2. What is mv3? ma3 omega 3. This is the equation of conservation of moisture. This is the equation of conservation of dry air. Hope you understood this. Clarity आ गया सर सभी को? We'll go for conservation of energy. तो यहां पे conservation of energy. देखो, and I'll be doing lovely questions. Separate इसमें 1. देखिए, now ma1 और h1 और बाकी के भी है, मुझे जरूर नहीं. ma2 h2, ma3 h3. Can you tell me what is h1? मैं already when I derived the equation, H1 is the enthalpy of this complete moist air, but unit क्या था सर? Small h का unit देखो आप एक बार, capital H by ma.
इसमें सारा मॉइस्ट एयर का है, लेकिन वी हैव एक्सप्रेस फॉर केजी ऑफ ड्राई एयर। अगर टोटल एंथैल्पी ऑफ दिस कंप्लीट मॉइस्ट एयर चाहिए तो क्या करेंगे, MA इंटू H करेंगे। बहुत बढ़िया सर, तो नहीं आया सर समझ में। So whatever this small h is there, it is the total enthalpy, but we are expressing for kg dry air. So therefore total enthalpy will be Ma into H. Excellent sir, no problem at all. Is it okay? Okay, अब देखो, now देखो, so can I write capital H1 plus capital H2, capital H1 plus capital H2 is equal to capital H3? Yes sir. What is capital H1? It is Ma1 H1. What is capital H2? Ma2 H2. And what is H3? Ma3 H3. ये हो गया सर आपका, बहुत बढ़िया। So hope you understood sir. This is the conservation of energy. So ये conservation of energy हो गया, ये conservation of mass हो गया सर। Ma1 omega 1 plus Ma2 omega 2 is Ma3 omega 3। तो यहां पे Ma1 H1 plus Ma2 H2 is Ma3 H3। बट यहां पे देखो Ma1 omega H1 plus Ma2H2 is equal to Ma3. Already you know Ma3. What is Ma3 sir? Ma3 is Ma1 plus Ma2. Ma3 is Ma1 plus Ma2 divided by H3. ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है सर। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। इज इट ओके? A1 plus Ma2 divided by H3. So इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे सर। We'll try to simplify. Ma1 भी है H1 minus H3 सही है गलत है सर? देखो, so therefore Ma1 by Ma2 is equal to Ma1 by Ma2 is equal to H3 minus H2 by, correct. So can I hope you understood this sir? बहुत इंपॉर्टेंट है सर ये। So can I hope you understood this sir? क्लियर? क्लैरिटी आ गया? देखो एक बार ऑब्जर्व करो, यहां पे 2 है तो 2 उल्टा है सर, यहां पे 1 है तो 1 उल्टा है सर। सो द रिजल्टेंट पॉइंट 3 इज डिवाइडिंग इन द इनवर्स रेशियो ऑफ मासेस। मासेस का इनवर्स में A1 है तो A1 यहां पे है, डायरेक्ट नहीं है, तो A2 है तो A2 इधर, 2 इधर है। सो द रिजल्टेंट पॉइंट 3 इज डिवाइडिंग द इनवर्स रेशियो ऑफ मासेस। होप यू अंडरस्टूड सर। तो यहां हम रोक देंगे सर। सो प्लीज रीड द थ्योरी केयरफुली। इसके क्वेश्चंस मैं बाद में करवाऊंगा। कल क्या करूंगा देखो एक बार। सो डेफिनेटली साइक्रोमेट्री के लिए ओनली क्वेश्चंस, ये थ्योरी इनफ है, तो अब मैं इसके जबरदस्त क्वेश्चंस करवाऊंगा, लेकिन थोड़ा इंतजार करो। तो कल का शेड्यूल है, कल क्या है सर? कल मे बी रैंक एंड साइकिल क्या है सर, एक बार देखो। कल मैं दिया था इनका शेड्यूल, एक सेकंड। एक सेकंड, एक सेकंड, लेट मी चेक व्हाट शेड्यूल आई हैव गिवन। देखता हूं सर मैं क्या शेड्यूल दिया। 6th tomorrow I'll be taking, देखो सर मित्रों, एक सेकंड, tomorrow I'll be starting पूरा डिटेल ऑफ रैंक एंड साइकिल विथ क्वेश्चंस। कल हम रैंक एंड साइकिल डिस्कस करेंगे, ओके ना?
तो आप बोलेंगे सर इसके क्वेश्चंस, यस आई एम कमिंग, यस आई एम कमिंग, यस आई एम कमिंग विद दिस। फर्स्ट ये मैं थ्योरी कंप्लीट करूं सर। क्या होता है ना, व्हेन आई कंप्लीट थ्योरी, न्यूमेरिकल्स के लिए मुझे फ्लेक्सिबिलिटी रहता है सर, बिकॉज विदाउट थ्योरी इट विल बी डिफिकल्ट फॉर मी टू कवर। तो आज का थ्योरी सभी को समझ में आया? टुडेज थ्योरी हैव यू अंडरस्टूड? कल सेम टाइम बहुत ही बढ़िया सा ये पूरा कर लेंगे, सो 10:30 से। ओके, सो 10:30 से विल इट बी ओके? रैंक एंड सिकल पूरा कंप्लीट करेंगे। ओके, तो हैव यू अंडरस्टूड टुडेज थ्योरी? क्लास होने के बाद अगर थ्योरी समझ में आए तो कमेंट कर लेना। एंड ऑलरेडी आई हैव कलेक्टेड सम ब्यूटीफुल 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 क्वेश्चन सर, तो साइक्रोमेट्री में, इस चैप्टर में। सो व्हेन आई अनाउंस योर नेक्स्ट साइक्रोमेट्री न्यूमेरिकल्स, यू शुड कवर दिस थ्योरी। मैं जो भी थ्योरी पढ़ा है वो पूरा थ्योरी पढ़ के आना, माइंड ब्लोइंग क्वेश्चंस हम करवाएंगे। विल इट बी ओके सर? क्वेश्चंस करवाएंगे, ओके राइट राइट। ओके, अभी कुछ पूछना है सर आपको? अभी कुछ पूछना है सर आपको? कैसा हुआ सर क्लास, मतलब इज इट सेटिस्फैक्टरी? क्लास इज इट सेटिस्फैक्टरी? अच्छा हुआ? चलो फिर ओके, बाय बाय। चलो चलो, बाय बाय, थैंक यू, आई एम एंडिंग दिस सेशन, बाय।